Hello, Janta. How are you, everyone? Welcome to Almighty Blues. Always a fan channel for Odyssey, no matter what. और भाई यहाँ पर तो डेडलाइन डे हो रहा है, तो hopefully we'll have everyone joining very soon. भाई हम लाइव है ना? हाँ, we are live, absolutely. भाई everyone, whoever is coming on. Firstly, सबसे बड़ा शौक बताइए. अभी तक डेडलाइन डे चल रहा है. Yes, गेम वीक 4 भी है. We are supposed to discuss that as well. But चिराग, वेलकम बैक यार. मतलब थैंक यू हम सो तो मच। मतलब लिटरली एक्टिव बोलूं क्या बोलूं, हम तो मतलब हाइपर एक्टिव है एज अ क्लब, वी नो दैट इनस एंड आउट. लेकिन पोचेटिनो का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, आई एम नॉट श्योर इफ यू गॉट अ चांस टू हियर इट. कहीं ना कहीं जो हम लोग बोलते हैं चेल्सी फैंस दैट भाई 1 बिलियन वो सब, एंड ही इज लाइक नहीं, बाई एंड सेल भी होता है यार, इट्स मैथ्स एंड ऑल दैट, एग्जैक्टली बट ये तो हुआ। जनरली एक वाइब क्या आ रही है? मतलब जनरली ट्रांसफर विंडो इज ऑलमोस्ट एंडिंग एंड आई नो वी हैव डन चेल्सी, ऑलमोस्ट. हाँ, फ्रॉम I, चेल्सी I सबसे think पहले. we were in a very we were in a new entering a new phase and we needed new faces, simply saying. So I think we did a very good job in that. पूरा Revamp is the right word. We did that perfectly. Getting exact money for the players we wanted, like Masons and Kai Havertz. We got the money we wanted, and we got the players also we wanted. Maybe we must have given a 10 million over for any other player, but still we got the player which we wanted. I don't think we missed out on any deal. We got every player that we wanted, and now it's on Poch and his team to give the results from this team. ठीक है. मतलब आई हियर यू एब्सोल्युटली. मतलब ऑब्वियसली ब्रेकिंग न्यूज तो बहुत सारे हैं भाई. डेडलाइन डे में इतने सारे डील्स मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट इस बार. लेकिन जैसे ऑनस्टीन ने भी बोला है भाई, एवरीवन इन द चैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यार. क्विक शाउट आउट दे देते हैं यहाँ पर. गौरव, सूर्यांशु इन द हाउस, टाइगर बीस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर, नबील, यूनाइटेड स्टूडियो, पुदिन, रूपक, मैंने पढ़ा आपका मैसेज. कोई नहीं यार, कोई नहीं. देखिए यार, ट्रांसफर विंडो ऐसा है ना, वी हैव टू बी वेरी डायनेमिक. जैसे all these players are dynamic on the pitch, we have to be dynamic as content creators, so we have to be very flexible यार when it comes to what news comes, or sometimes at the end of the day आप लोग जो सुनना चाहते हो, तो sometimes that becomes a headline, simply put. लेकिन हम we'll rate all the transfers. बहुत सारे ट्रांसफर्स मैं सोच रहा था यार, मे बी इट मे नॉट हैपन ओवर द लाइन. लेकिन चिराग, ऑब्वियसली मैंने थंबनेल में डाला है, 2-3 तो भाई हो ही गए. सुनने में आ रहा था, रूमर्स आ रहे थे, ग्रायन ग्रावेनबर्ग टू बायर्न म्यूनिख, टू लिवरपूल फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, मे नॉट हैव हैपेंड. लेकिन अभी भी कंफर्म कर दिया है फेब्रिशियो ने कि दोनों साइड से हो गया है. तो लिवरपूल फैंस को कंग्रेचुलेशंस. बट इसके बारे में मैंने एक स्टोरी डाला था आज, चिराग. इफ समवन हैज फॉलोड माय चैनल, मैंने बहुत पहले ही बोला था चेल्सी के लिए. 2 साल पहले मैंने स्काउटिंग करा. वी यूज्ड टू डू अ स्काउटिंग फॉर चेल्सी I वाला remember. I एक remember. ड्यूरिंग द यूरोज ना, वी यूज्ड टू डू अ सेक्शन को I स्काउटिंग फॉर remember. I चेल्सी. उस remember. समय से मैं तो भाई ये गा रहा हूँ लिटरली दैट वी शुड गेट हिम. ही इज मोर लाइक, कैसे बोलूं, a better version of a Casey, if you know what I'm speaking, right? I would say. But is he लिवरपूल का आंसर है क्या? लिवरपूल को मुझे डीएम चाहिए था यार उनको तो. I don't think so. Liverpool has just sorted out on something जो उनको मिल गया at last. They missed out on a lot, and I think they are banking on that Asian guy a lot. They're banking on him a lot. अच्छा Let's see भाई, how he. चिराग पहली बार आ रहा है चैट में. सब लोग बता दीजिए यार, लिवरपूल फैंस, बिग लव टू यू यार. लेकिन सब लोग बता दो, वटारू एंडू का हमने नाम क्या रखा है? चिराग को पता नहीं लगता है भाई. नहीं नहीं सब नहीं. लोग जो भी चार्ट में है, जो भी जानते हैं, अपना नामकरण जो हमने किया है वटारू एंडू को बता दीजिए. प्यारा सा नाम रखा है यार अपने. पुदिन, पुदिन किधर है यार? पुदिन, लेट्स कॉल पुदिन. जस्ट मैसेजिंग एक डाल रहा हूँ यहाँ पर. ओके, लेट्स सी इफ यू कैन कम. तो व्हाइल द चैट आंसर्स दैट, लेट्स कंटिन्यू कन्वर्सेशन. ठीक है. बिप्रा ऑल गुड यार, बिप्रा रखते बॉल गुड, ऑल गुड भाई. फेलिक्स भी या आई थिंक I think he'll एयरपोर्ट. go to Barca. He'll go to हाँ, Barca. वो यार आई थिंक बेसिकली वो 2 दिन से वेट कर रहे थे क्लियरेंस फ्रॉम ला लीगा आफ्टर द फाटी Party वाला deal. deal. लेकिन मतलब कमिंग बैक टू लिवरपूल, जनरली मुझे लगता है कि यार लिवरपूल कहीं ना कहीं एक सोशल प्रेशर नहीं होता है, पीयर प्रेशर, ऑलमोस्ट उसके कारण. क्योंकि देखिए मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक फन यार, अगेन वो लोगों को लगता है वो सर्कमस्टेंसेस, क्या बोलो, फैक्ट्स बोल रहा हूँ यार. फैक्ट्स क्या थे कि काइसेडो और लाविया दे वर गोइंग बिग टाइम. ठीक है, काइसेडो चलो ठीक है, Easily. वी डोंट एक्सपेक्ट. लेकिन लाविया तो भाई फॉर श्योर वो इंटरेस्टेड थे, काफी इंटरेस्टेड थे. अब प्रॉब्लम है कि बिकॉज वो काइसेडो में इंटरेस्टेड थे, उनका शिफ्ट हो गया फोकस. फिर एंडो आया, तो एंडो आया ठीक है, गुड इनफ, बट स्टिल बाइजेटिच आपका बहुत यंग है फॉर हिम टू बी रिलाइड ऑन. लेकिन जनरली मैं बोलता हूँ, आप लोग भी बोलिए,
ये इसके बारे में डिस्कस करना है। देखो, क्लॉप इज समवन हु इज अ गुड मैन मैनेजर, लेकिन इवन क्लॉप, चिराग, वुड ही बी एबल टू मैनेज योर मैकलिस्टर, आपके सोबोसलाई हु आर पोटेंशियली स्टार्टर्स, विद ग्रेवनबर्ग कमिंग और कर्टिस जोन्स एपरेंटली बहुत अच्छा किया है फॉर इंग्लैंड अंडर 21, हावी एलियट, थियागो अभी तक है लिवरपूल में, आई नो इंजर्ड रहता है आधे से ज्यादा, लेकिन विल ही बी एबल टू मैनेज दैट? I'll rather say ग्रेवनबर्च के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 2 साल तो वो खेला ही कहाँ बेचारा, सिंस हिज नहीं, मूव टू मैं बायर्न। इसलिए बहुत सरप्राइज जो भाई चेल्सी पर ही आ रहे हैं यार, ऑब्वियसली मेन हम्म, चला गया तो वजह डिफॉल्ट तो बात करनी है। मैं सोचा अब शुरू यहाँ से करते हैं, बिकॉज ग्रेवनबर्ग का वो डेडलाइन ऑलमोस्ट, बुंडेसलीगा डेडलाइन अभी हुआ है ना ट्रांसफर विंडो का, तो अभी अभी न्यूज आई है। तो देखो, मैं बोलता हूँ ग्रेवनबर्ग का अगेन हैविंग क्लोजली वॉच, मैं पर्सनली, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, एक स्काउटिंग नहीं, एक एक मेरा ये भी था कि यार नहीं चाहिए मुझे चेल्सी में वो वाला प्लेयर था, क्योंकि at 19 years of age, this guy has broken records of clearance set off in the Eredivisie. मतलब it's Yeah, huge, I remember huge. ठीक है? how good he has been and how good he actually plays. But my simple point I'll say is कि do you think कि he is right now in a shape कि वो बोले कि मुझे starting spot दो? क्या वो क्लॉप He को is, बोल सकता because है? I think टूकल ने बोला है even before Liverpool confirmed, even before Fabrizio confirmed, उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दिया कि बंदा खेलना चाह रहा था और बहुत दिनों से जाना चाह रहा था बेसिकली। सो एंड नोइंग डच प्लेयर्स अगेन पर्सनली, भाई वो दे आर ईदर माई वे और द हाईवे, यू नो दैट Yeah, मोस्ट yeah, डच yeah, प्लेयर्स आर नोन definitely, फॉर, ठीक है? definitely. और वो एक चीज है, तो ही वाज अनहैप्पी देयर, तो द फैक्ट इज अब वो लिवरपूल जा रहा है तो सोचते हुए कि ही विल गेट गेम टाइम, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इज अनफेयर ऑन I हार्वी think एलियट एंड कर्टिस जोन्स आल्सो, अगर वो I खेले। think he is a direct replacement to McAllister, which is what I believe. हम्म, He will get a game time in a lot of games where Liverpool need to kill off the game when they are 2-1-0 up, yeah, 2-0 up. In the 60th minute, you might see him coming on for McAllister or maybe even a Shobozolai, and to just kill off the game, because he has that in him to control the ball, to have the ball under his feet, to play the game. I think this is where they are heading for. This is where Klopp is heading for, and I'm happy that Klopp is actually building up his strengthening his bench. Finally, Klopp is strengthening his bench somehow. But trusting बस वही Endo for आप more मतलब लेने than के लिए ले रहे हो, मुझे ऐसा लगा ऑलमोस्ट कि यार अच्छा प्लेयर है ले हाँ, लेते हैं, मतलब exactly, इट्स exactly. ऑलमोस्ट चेल्सी टाइप ही, मैं बोलता हूँ मैं भी यहाँ पर, हम भी दूध के दूल्हे नहीं है, लेट्स बी रियल। अब आ जाते हैं चेल्सी पर यार, काफी लोग बार्सिलोना, भाई एवरीवन इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, यू गाइस नो इट, यू गाइस नो द ड्रिल। हमने करना है वीकेंड का वार भाई, ऑब्वियसली मैं सोचा है आज थोड़ा वीकेंड का वार तो हम करते ही है, लेकिन आज थोड़ा डेडलाइन डे पे तो भाई विल बी टॉकिंग ट्रांसफर्स एंड लिटरली एवरी क्लब, तो अक्रॉस लीग्स हम डिस्कस करेंगे। तो इट्स अ लाइव स्ट्रीम, विल कम क्लब बाय क्लब फॉर श्योर। यहाँ पर वी हैव मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन इन द हाउस ऑफ मुसाविर भाई इन द हाउस। क्या हाल है भाई, नाइस टू सी अरे यू। बढ़िया बढ़िया गाइस, मैं वही बोला ना, बढ़िया अब दुनिया वाला देता तो देता छप्पर फाड़ कर, मतलब इतने एकदम। दिनों से हमारा कोलैब करना था, अब 2 दिन में 2 बार आ गए, मतलब ये दैट्स एग्जैक्टली ग्रेट टू सी। एग्जैक्टली भाई, मैं भी बोला यार कर लेंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैं, एंड एक हाफ आवर की लाइव स्ट्रीम करके मैं एकदम से बोला भाई अंकित भाई के स्ट्रीम में जाएंगे जल्दी से जल्दी। एंड आज तो बनता है बिल्कुल यार, बिल्कुल, थोड़ा सा लॉट्स टू खुशी टॉक। खुशी मिली है। कल जो थोड़ा सा नाराजगी मिली थी, आज थोड़ी सी खुशी मिल गई दैट वी हैव साइंड अप अमराबाद। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट गाय मैन, क्योंकि हम मेरे वही को डिस्कस कर अपनी रहे थे, मिडफील्ड ना मिडफील्ड भी मतलब। डिस्कस कर रहे थे मुसाविर भाई, अच्छा चिराग के साथ मैं बोल रहा था भाई, ग्रावनबर्ग लिवरपूल क्यों गया, जब आई थॉट दैट मे बी इज अ बेटर फिट एल्सवेयर, लेकिन या मैनचेस्टर यूनाइटेड को तो भाई आई थिंक यू प्रोबब्ली नीडेड अमराबाद फॉर श्योर, क्योंकि कैसेमीरो का बैकअप आपको चाहिए था। लेकिन जो डील है ना, आई वो मोर इंटरेस्टिंग फॉर पीपल हु डू नॉट नो, ये एक लोन है विद एन ऑप्शन टू बाई, करेक्ट? तो एग्जैक्टली आई थिंक या 10 मिलियन यूरोस का लोन फी है, दो आई थिंक इट्स या नॉट अ स्मॉल अमाउंट टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली प्लस आपका 25 मिलियन यूरोज ऑन टॉप ऑफ दैट, आई थिंक प्लस एड ऑन्स अगर आप या बाई करते हो लेटर ऑन, तो इवेंचुअली एग्जैक्टली दिस विल बी अ डील वर्थ अराउंड 35 to 5. 40 मिलियन यूरोज, विच इज अराउंड 35 एग्जैक्टली मिलियन पाउंड्स। तो इतना ही करना था, यू नो आम्रबाद मच प्रूवन प्लेयर एंड ऑल दैट, हमारे पास था यार प्लेयर लास्ट सीजन जो हमने साइन नहीं किया, जकारिया, बेचारा पता डेनिस। नहीं मोनाको गया है, आई थिंक इन द एंड। तो Yeah, are you exactly what convinced with the happened financials? with him at Chelsea? Yeah, I thought he was very good. But Poch, No, sorry, not Poch, Zakaria. Potter never wanted to play with him. Poch did not अच्छा find that player in him. वो अलग ही खिलाता था. चांसेस उसको ही नहीं दिए do ना towards the end of the last हाँ, season. I think Lampard also did not हाँ give मुझे enough लगा chances. ऐसा कि इंक्लूजन ही बहुत कम किया उस प्लेयर का ऐसा टाइप में, राइट? exactly. बिल्कुल He He never deserved got a better man chance. in my opinion. Yeah, definitely. Yeah. मतलब
उसके साथ तो हुआ ही बुरा था, उसको एकदम से एक तो लास्ट में उठा लाया आउट ऑफ नोवेयर, उसको बताया भी नहीं था मेरे हिसाब से, तो उसको पैक कराया और बोला तू जा रहा है, तू जा। Exactly. Yeah, that was bad on Chelsea's part. And my brother is sitting over here and he's saying, "भाई नहीं खास नहीं था player," because he's a mad Chelsea fan. So and also he was injured क्या? Injured हुआ था ना? बीच में he इंजर्ड he हाँ Yeah. he was coming back from injury, वो भी था और थोड़ा बहुत इंजर भी होता, लेकिन the fact is यार आपने ट्राई नहीं किया ना, तो मैं बोलता हूँ यार sometimes you just get that impression। एक चेल्सी में तो खैर मतलब अलग ही माहौल था, everything was wrong and we just wanted a change, यार इसलिए maybe one of those things है। what do Manchester you think, United Ankit भैया? What do you think? Is Amrabat better suited to Manchester United's gameplay, or it would have been Zakaria? देखो मैं वही बोल रहा था ना, देखो अमराबाद इज अ वेरी गुड प्लेयर, डोंट गेट मी रॉन्ग, ठीक है, एब्सोल्युटली गुड, लेकिन जहां तक मैंने देखा है अमराबाद को, क्योंकि यू ऑल नो दैट मैं सेरिया भी काफी क्लोजली देखता हूँ, Yeah. तो आई बिलीव दैट अमराबाद में मोबिलिटी की कमी है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज बैड, In terms of runs. हाँ, in terms of runs, in terms of taking those spaces, in terms of basically those kind of things that you expect being a Manchester United, being in Eric Ten Hag way, वहां पर मुझे लगता है थोड़ी सी कमी, इसलिए मैंने जकारिया में आई नो पीपल माइट बी थिंकिंग मैं इट इज अ पन, नो इट वाजंट, हमने देखा था, एंड यू राइट, मुसाविर भाई इज राइट दैट, चिराग हमने बात ही की थी, जकारिया इन मोमेंट्स व्हाटएवर ही गिव, आई थिंक ही हैड दैट एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी था टू रीच Exactly, इनटू द yeah. स्पेसेस, And व्हिच इज one more thing about Amrabat is, when we saw him play for Morocco in the World Cup as well, he always needed a Unahi with him. I think Amrabat and legs. Unahi were the very important part of the Morocco team, not just Amrabat alone. Do you have that in United right now? Are you ready to sacrifice a Mount or a McTominay is staying, bro. Breaking news. So is he Yeah, not that guy? McTominay is staying. I think he can complement you, because I think McTominay can play as a destroyer instead of Amrabat. Basically, Don't you वो think? legs है और Amrabat is your destroyer actually. The other way around. Yeah, no, I mean like the other ways. I mean like Correct. sometimes he can cover up, sometimes, because दोनों का प्रोफाइल जो है थोड़े पास, इसके पास लेग्स हैं, इसके पास थोड़ा सा कम लेग्स हैं, but I think दोनों can complement each other in my opinion, right? तो आपको 0-0 तो से basically मुझे लगता है compromise कि करना या तो होगा। कैसिमिरो खेलेगा Yeah. या तो they will both play, or maybe Amrabat and Eriksen also if Amrabat is a destroyer. ना एरिक्सन आई वुड से नो, बिकॉज यार फिर तो वो वही हो गई ना, फिर वो दोनों सेम रन्स लेने वाले बंदे हो गए ना फिर। But guys, ये वाला हो गया। this is the breaking Oh! news। यहाँ पर अरे भाई, बुंडेसलीगा ये कब विंडो हुआ? has just खत्म अभी हुआ है, बुंडेसलीगा विंडो। बंदे ने क्या किया ना, 2 मेडिकल दे दिया, 2 मेडिकल, ठीक है, he was done, जर्सी के साथ फोटो वो सब ले रहा है, और भाई डील कोलैप्स। How did that happen? How did that Fulham unfold? have screwed up और Bayern have screwed up, I have no idea, लेकिन बेचारा Shit, पालिनिया man. नहीं जा पाया बायर्न Yeah, में। he ये तो deserved भाई better, यार। CS2 PSG वाला मामला ऑलमोस्ट हो गया, उससे भी वर्स हुआ, क्योंकि I पालिनिया just- के साथ फोटो ले रहा था। collapsed. I just want to know one thing. There's still good 4.5 hours left in the Premier League window. Can we see a Palinia to some top 6 club? मैं वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ अमराबाद की बात हो रही है, ग्रैवनबर्ग की बात हो रही है, पालिनिया टू लिवरपूल वुड हैव बीन अ बेटर फिट इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट। I agree. लेकिन ठीक है, मतलब इट्स नॉट माय लॉस, जस्ट सेइंग, आई नो दैट ग्रैवनबर्ग इज अ बेटर प्लेयर इन ओवरऑल, लेकिन पालिनिया इज अ बेटर डीएम, सिंपल एज दैट। One team I am right now looking at who might go for him after missing out on Gallagher. Can Spurs actually Spurs? pull it off? हाँ, Do they have that kind of bank right now? हॉयबर्ग नहीं जा रहा, वो भी डील ऑफ हो गया है। हाँ, हॉयबर्ग No, will have that- Højbjerg in return to Fulham. हाँ, That's not a bad one. this can be an interesting deal, but I don't think so यार, उतना पुल करेंगे वो पालिनी को। I think Palina will wait one more year. Oh, Yeah. but that will be too harsh on this guy, yaar. Let's ask मुसाविर भाई, Fulham jersey now. दाविड डिया का हुआ था ना, remember fax machine Yeah, and all that. oh, Real Madrid, that fax machine. It's kind of similar, I right? think- David Dia Yeah, it's kind of, yeah, I'm kind of shocked यार, क्योंकि I think ये 1 घंटा या आधे घंटे पहले ही हुआ है ऐसा कुछ सीन, right? हाँ, अभी जस्ट हुआ है, बट देखते हैं भाई, मतलब चिराग इज अ पॉइंट अबाउट पालिनिया, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्विकली आता है, आई नो चिराग हैज टू गो एज वेल, भाई गाइस, व्हाइल वी आर कमिंग टू बारसा एंड ऑफ कोर्स अदर लीग्स एज वेल, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज फॉर चेल्सी फैंस यार, ऑफ कोर्स वहाँ पर इन अ सेंस चेल्सी भी रिलेट करता है, बिकॉज फेलिक्स, बहुत चेल्सी फैंस चाह रहे थे कि भाई आ जाता, लेकिन हमने लास्ट में कोल पामर लिया है। अब कोल पामर कमिंग इन, इज दैट द रीजन क्यों हम बोल रहे हैं भाई मार्टसन एज वेल एज गैलेगर के लिए
हम बोल रहे चिराग दैट वी माइट बी ओपन टू सेलिंग देम. गैलेगर का सुनने में आ रहा है 45 to 55 मिलियन पाउंड्स का जो रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मतलब वी आर हैविंग व्हाट काइसेडो, लाविया, एंजो फर्नांडिस, उगो चुकू, Gallagher. ठीक है, इन द सीडीएम पोजीशन. तो गैलेगर खेलता तो कहाँ खेलता? अगर नंबर 10 में खेलता अंटिल कार्नी केम बैक, ठीक है. Yeah. और वहां पर आप पामर कर दिया क्योंकि पामर का प्राइमरी पोजीशन इज कैम. ही कैन प्ले ऑन द राइट विंग, लेकिन प्राइमरी पोजीशन इज नंबर 10 टू बी ऑनेस्ट, राइट. तो आई थिंक दैट इज अ क्लियर रीजन. लेकिन इज पामर मोर रेडी? I know different players are not a right question. Again, Palmer more ready compared to a trio of a midfield of Gallagher, Enzo, or Caicedo. Chirag. See what happening with Enzo, Caicedo, and Gallagher was कि Enzo, rather I was seeing a more player was in a more advanced position. He was getting that into the 10 वाला role and doing वो that. floater है basically अपना Fabregas types. हाँ, and उसको cover करने के लिए Gallagher was the right one. But with Palmer coming now, you would have to restrict Enzo to a place. I see Palmer a player for the right side more because that is the place. Because what I am seeing is कि आप यहाँ से तो बेन चिलवेल वाला फ्लैंक खिला रहे हो. You want to go completely कि मैं वहाँ टच लाइन को हक करूंगा. जो हमारी साइड लाइन से वहाँ मैं हक करके खेलूंगा. एंड जो हमारी राइट साइड है वो बहुत डायनेमिक है. You want your गुस्तो या फिर रीस जेम्स whoever is there to flank you, जो पीछे से आपके रन्स बनाएगा एंड अ प्लेयर जो बीच में वन ऑन वन ड्रिबल्स ले सकता है. एंड कोल पाल्मर इज दैट गाय जो वन ऑन वन लेता है एंड ही लव्स टू डू दैट, जो बीच में घुसेगा बार बार. दैट इज द पोजीशन आई फील वी आर गोइंग फॉर. एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट लाया चिराग ने, बिकॉज आई फील मुसाविर भाई अगेन प्रैक्टिकली बीइंग अ कोच यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड दैट इफ समवन इज लेफ्ट फुटेड काइंड ऑफ मेक द पिच वाइड. I think Palmer has played on the left hand side as well. I'm pretty sure यहाँ पर last season Chelsea का he has played on the left hand side भी. Chilwell again, it might be the harsh opinion, 3 ही matches हुए, लेकिन arguably Chilwell has been one of the worst players on the pitch for Chelsea. वो उसका natural position नहीं है, let's put it that way. Not because of Chilwell, it's because of the position he's being played. हाँ, exactly, उसका position है. Yeah, that's been the thing. Yeah. वो Marcus Alonso सोचा है, Poch ने सोचा है, Alonso आ गया है, लेकिन है अपना Chilwell. तो what would you say मुसाविर भाई, मतलब what is the best usage that Chelsea should have of Palmer, and is it harsh even for Ian Maatsen जो by the way बोल रहा है कंपनी को फोन करके नहीं भाई मैं चेल्सी में रहूंगा. अब अप अंटिल नाउ थिंग्स माइट चेंज. 31 मिलियन पाउंड का वहां पर भी बातें चल रही विद बर्नली. सो व्हाट डू यू थिंक इज द सॉल्यूशन फॉर चेल्सी अटैकिंग वाइज? यार अटैकिंग वाइज आई वुड से कि यार चिलवेल को रखना जरूरी है. आई मीन लाइक सीरियसली अभी ठीक है 3 मैचेस इनिशियल 3 मैचेस ही हुए हैं. तो स्टार्ट करेगा चिलवेल इज व्हाट यू सेइंग? हां या इन माय ओपिनियन इट विल बी on the left wing position. या not left wing I would say. No एक टाइप ऑफ विंग बैक आई वुड से. लेकिन वही है ना, आप इफ यू सी चेल्सी ना क्या कर, हम भी सोच रहे थे विंग बैक कर रहा है लेकिन वो ऑन पेपर था. दूसरे मैच में पता चल गया वो खेल ही नहीं रहा, वो बैक फोर ही खेल रहा है. लेवाई कॉलविल basically Levi Colwill is playing like a Guardiola does for City. Exactly, but no has if I was the coach I would say that कि मैं यार उसको नहीं ये करता, मैं उसको खिला लेता क्योंकि भाई उसके पास वो क्या बोलते हैं उसको एक pedigree of playing PL for so many years also, and he's like what Alonso was in एक suddenly एक सीजन आया जहाँ पे Alonso दिख रहा नहीं था, फिर एक सीजन आया जहाँ पे Alonso was everywhere. So you see that kind of width provide कर सकता है पिंच. And Chilwell भाई चैंपियंस लीग विनिंग सीजन में तो he was very good as a wing back for us. Exactly. So I would say यार ठीक है इनिशियल मोमेंट्स हैं अभी भी बहुत यार, बस 3 ही आई थिंक मैचेस हुए हैं तो आगे आई वुड से यार चिलवेल को खिला लेना चाहिए. अगर हार्श होगा, अगर उसको सडनली अभी आप बेंच करना स्टार्ट कर दोगे या फिर उसको यू आर थिंकिंग अबाउट लाइक ठीक है यार वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम बेंच चिलवेल क्योंकि आप he's a captain mind you in Reece James. He's a captain. I don't think he's being dropped anyhow. Drop तो नहीं होगा, but what you can एक क्या बोलते हैं उसको एक आप बोल सकते हो इंटरचेंज होता रहेगा थोड़ा थोड़ा. हो सकता है कुछ मैचेस को बैठने पड़ जाएं, कुछ मैचेस उसको खेलने पड़ जाएं, वो वाली सीन है. तो फॉर एग्जांपल चलो कर ही लेते हैं थोड़ा सा अभी. आई नो आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई एम जस्ट वेटिंग. आई थिंक दक्ष आल्सो विल बी जॉइनिंग थोड़ा लेट, लेकिन ही विल बी कमिंग इन फॉर फ्यू मिनट्स गाइस. अगेन जो भी लोग देख रहे हैं भाई डू नॉट फॉरगेट हिट दैट लाइक बटन, सर्टनली हेल्प्स. और भाई क्विक शाउट आउट यहाँ पर प्ले मेकर इंडिया यार, ब्रिलियंट इंडियन फुटबॉल कंटेंट एज वेल एज मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन यार अपने भाई मुसाविर भाई, उनको भी चेकआउट करिए एज वेल एज फुटबॉल मेडिको, डू चेक हिम आउट एज वेल एज मिडविकेट एंड ये फॉर आर्सेनल. टाइगर बीच यहाँ बोल रहे हैं वी नीड अ स्ट्राइकर भैया, वी आर लैकिंग अ डिपेंडेबल स्ट्राइकर. बैकअप ब्रोया इज नॉट फिट एंड प्लेसिंग ऑल एग्स इन जैक्सन इज रिस्की एक्सपेक्टिंग एनीवन. प्रॉब्लम यही है ना कि इट्स जस्ट नॉट ब्रोया, वी आल्सो हैव इंकुंकू कमिंग बैक और हु हिमसेल्फ कंसीडर्स हिमसेल्फ एज अ स्ट्राइकर, ऑल्दो ये मोर ऑफ अ सेकंड स्ट्राइकर है. नहीं तो वो एक
प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हमें वापस वही लास्ट सीजन वाला चीज हो जाता ना चिराग, अगर हम लाते भी अभी मतलब तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होता ही होता है, साथ ही साथ आप किसको कन्विंस कर लेते, आपने बर्स्टो को कन्विंस नहीं कर पाए कि तू रुक के लोन पे मत जा. You could have convinced Bursto to stay for a few he's gone months to and Sunderland guys, for people wondering, वो चैंपियनशिप जा रहा है and I think Bursto is not ready. We have seen enough to say that he's yeah. not ready anyway. नहीं, बट आपको अगर बैकअप भी चाहिए तो यू कुड हैव आस्क्ड हिम. हमने एक बार नूसा पे ट्राई करा नूसा के लिए, लेकिन हमारी बिड रिजेक्ट हो गई या फिर हमें ऑफर ही रिजेक्ट हो गया कि दे आर नॉट विलिंग टू लेट गो ऑफ David Washington, if I'm not wrong, he's still at Chelsea. He's not gone. Yeah, he is still at Chelsea. But Okay, do you think he is a part of the first team now? नहीं अभी like seriously not Washington because यार अभी मतलब you can't just pressurize him with the PL नहीं, thing right he's now. a young striker as a third Yeah, choice like, option on the bench. हाँ, no problem with that because ये same चीज ना I was discussing with my brother कि भाई हर चीज में आप लोग stacked हो, मतलब एकदम टॉप क्लास टीम है आपकी stacked है, पर जब आप देखते हो कि भाई स्ट्राइकर पोजीशन पे it's like it looks very mediocre in my opinion, very mediocre until and unless Nkunku comes back. तब थोड़ा सा लगेगा जैक्सन तो इज ब्रिलियंट यार, जैक्सन No, क्या Jackson बोल रहे हो very कि brilliant. not But have. कब तक What- वो वाला सीन होता है ना कि यार suppose something happens, खुदा ना खास्ता वो हो जाए. लाइकली भी है चेल्सी में. I'll tell you what we are planning is कि we are not looking for goals from a striker. मतलब this is a very controversial and a vague statement to say कि हम स्ट्राइकर से गोल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. 1-2 But खेलता है और ड्रॉप बैक करता है जैक्सन. हमारा पॉइंट इज कि हम गोल्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं. Once a Mudryk is fit, you will see Mudryk scoring a lot this season. Sterling is already flourishing so well. You will see Nkunku scoring a lot of goals. This is where we are practically putting in things ki Nicolas Jackson could be the provider and everybody else will be getting in the and stacking up goals. Jackson will get you goals, but not a 20 mark figure in a season. He might have a assist chart of 10 and a goal chart of 10. 20 goal contribution होंगे, but not a 20 goal season singly if you want from a striker. And yeah, Broha भी most probably back हो ही जाएगा. Let's hope he is back fit, and when he is in his form, he is a good player. We all know that. ऑफ कोर्स चांस तो देने, लेकिन वो ये लॉन्ग टर्म इंजरी हमें हमेशा एज अ जूरीज आउट वाला मामला है यार. गेट इन शेप बाय द वे गौरव, इस पर आएंगे, इस टॉपिक पर ही बात करना अपने को. पामर एंड स्टर्लिंग प्रोफाइल नहीं यार, काफी डिफरेंट है. आई नो पामर वाज अंडर द विंग ऑफ स्टर्लिंग एट सिटी. उसने खुद बोला है दैट कहीं ना कहीं वो मेंटोर कर रहा था उसको ड्यूरिंग लास्ट ईयर सिटी, दैट इज स्टर्लिंग. लेकिन पामर इज अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर हु प्लेज एज अ कैम, हु कैन प्ले वाइड. स्टर्लिंग स्टार्टेड ऑफ करियर एज अ विंगर एंड देन प्रॉब्ली मूव्ड लिटिल बिट सेंट्रली विद सिटी. एंड आई थिंक स्टर्लिंग का तो भाई अलग ही सीन है. एब्सोल्युटली आई थिंक Sterling is someone who runs at people. Palmer is someone, मैं बोलता हूँ Palmer is almost like a Phil Foden vibe देता है मुझे. मतलब I know अभी बहुत the profile wise I would say profile wise yeah right, तो वैसे देता है. मतलब if you have to compare but हाँ ये point यार, मतलब again we have Manchester United fan जो भी बहुत criticism मुझे देखने को मिला है. I know अंशुमन को भी बुलाया था यार बात करने के लिए. बहुत rant हो रही है. Manchester United fan selling बोल रहे हैं यार अपने लोग तो भाई यहाँ पर हॉल को 35 मिलियन और कितना 40 मिलियन बेच रहे हैं. आप लोग अपने यंगस्टर्स को 1-2 मिलियन में बेच रहे हो. exactly. All due respect to Manchester United, लेकिन भाई let's be real, Cobham is there. There's some level of Cobham आजकल. लेकिन it's not आजकल भाई, it's been like I would say few years, yeah. last few years 5 to 6 years I am seeing Cobham जो है top class talent produce कर रहा है. And but ये अब ये देखो, अब by the way good news for me at least भाई personally, so people know that we promise he has kept it. Chalobah is not going to Bayern Munich as things stand guys. तो वो he is staying at Chelsea as things stand. Although अभी भी 4 घंटे बाकी है. Forest interested है जो 10,000 players all sign. लेकिन उसने मना कर दिया. Forest ने मना कर दिया. चलो गुड. मना मार्टसन गैलेगर का अब ये देखो, टॉटनहम अगर देती है in the next 3 hours, if they pay 45 it's 50 done. million, 45 में भी हो जाएगा. तो भाई दोनों मिलाकर 80 मिलियन for 2 academy grad seems like wow. लेकिन हमको कोई 2 मिलियन दे दे वही कुछ ही है भाई. लेकिन गैलेगर तो भाई इंग्लिश भी है ना, ये भी है ना, इंग्लिश इंटरनेशनल. yeah, English tax तो लगेगा but he's a talent man. He's a talent. He has been proving that in and out again. लेकिन what is your opinion? मतलब मार्टसन is a player that मैं बोलता हूँ, मैं तो all the blame, मैंने ट्वीट भी कर दिया इसके बारे में. कुकुरे as a blame और मैंचेस्टर यूनाइटेड is to blame. भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों नहीं लिया यार कुकुरे को? I don't know, like seriously, how why did that deal fail off? I don't know. Basically वो कप गेम खेल दिया एक, तो basically वो deal एक clause डाल नहीं सकते थे कि यार we might have to break that loan in January. Yeah, okay. कर देते बाद में देखते. मतलब everyone in the chat बोलिए
not by form but generally overall last 18 महीने के गेम से बोलिए, who's better, Kukurea or Reguilon? Any day Kukurea. And यार just one कुकू more has thing. done enough to say he's better than Region in my opinion. हाँ 18 महीनों के बात हो रही है यहाँ पर. Yeah. And I'm just asking you कि मतलब आप पूछ रहे हो कि डील क्यों collapse हुई? Just because you were paying penny. It Yeah, was वो not तो even pennies. exactly, and we have been overpaying for the wrong players. It's been a scenario for seasons right now, yeah. I just say if you just put in an offer of 3 million and you're not going beyond that, you are asking your rival. It's a top 6 rival. You are asking for a player that to help you in a position they know कि आप weak हो इस time पे because of Yeah, your injury. exactly. तो कोई नहीं बेचेगा. Yeah, Tottenham is not anyways, your it's a, rival right now. yeah, exactly, and that's why they did with Region in my opinion. And तो यार ये तो भाई होता रहा है ना not वैसे भी. just Lewis Hall, we are losing Ian Maatsen possibly because of this thing यार. कुकुरेया हमारे प्रॉफिट नहीं दे रहा है और कोई क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर ऑब्वियसली चलो वो क्लॉज नहीं कर सकते थे एंड दैट्स व्हाई दे डिडंट अग्री, बट फाइनली ही इज स्टेइंग एट चेल्सी. मतलब दैट्स अ क्लियर रीजन फॉर मी, क्योंकि हमारे पास कॉलवेल है जो सेंटर बैक है जिसको लेफ्ट बैक खिला रहा है पॉच, फिर आपके चिलवेल ऑलरेडी हम बात कर चुके, देन वी हैव कुकुरेया. द मार्टसन अगर खेलेगा तो नंबर 10 इज नॉट हिज रोल राइट चिराग, तो देन तो आई कैन यार अंडरस्टैंड. मतलब वही ना, वही वाली बात है कि आप स्टैक अप कर लो कि इन केस जरूरत पड़ जाए कि 3-4 इंजरियां हो जाए तो यू कैन पुट इन अ मैटसन लाइक गेम रेक्सहैम वाली गेम की तरह, रेक्सहैम कह रहा हूँ जो हमारी गेम हुई अभी लास्ट गेम की तरह, विंबलडन की तरह कहीं पे बढ़ा दो. लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, देखो अभी आई नो कहीं ना कहीं मतलब हम बोल सकते हैं रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है यार, लॉ ऑफ एवरेज क्या है, चेल्सी में हर एक मंथ 2-3 इंजरीज होनी है. एज मच एज आई डोंट लाइक दैट फैक्ट, ठीक है, होनी है यार. लिवरपूल चेल्सी भाई भाई उसमें एक चीज मैं बोलता हूँ, ठीक है, हम वी आर नोन फॉर इट, बट राइट नाउ ऑल्सो आप देखो तो कार्नी इज आउट, इंकुंकू इज आउट. Why is Poch hesitant to even start Maatsen? हम चिलवेल की बात कर रहे हैं. Maatsen is more attacking in that left wing position. वही लेफ्ट मिड जो पोजीशन वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उससे, पॉच जो हमें एक्सपेक्ट कर रहा है वही तो मैटसन का बेस्ट रोल है. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाई आर यू डूइंग दिस. द मेन एडवांटेज जो उसको चाहिए टू लिवाई कोलवेल प्ले एज अ लेफ्ट बैक इज द क्रिएटिविटी कोलवेल हैज. If you restrict him as a center back in a back two, the problem is Levi cannot cut through those passes. वो बीच से बॉल नहीं निकाल सकता. तो उसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलता है, एक बफर नहीं मिलता है. गॉट इट. Exactly, that is what he wants from Colville. And आपको चिलवेल खिलाना ही खिलाना है. So what he is trying बाहर से वो पास करता है ओवर द टॉप, which Kukurea actually does well by the way, just saying. No, I really don't भाई वो गोल उससे है एंजो का फर्स्ट गोल कुकुरेया के पास थी. आई नो गोलकीपर एरर, बट आई थिंक कुकुरेया गोलकीपर एरर था, क्लियर गोलकीपर एरर था उसमें, तो क्या ही पास. मैं अभी भी गौरव बोल रहे कुकुरेया को लोन कर दो ना. आई एम ट्राइंग टू सेल कुकुरेया जैसे मैं उसका एजेंट हूं, बट एनीवे प्लीज कंटिन्यू. मार्केटिंग चल रही है. I can do that very well if you make me the agent. 1% दे देना बस. But coming back to the point, I think Kukurea does not fit into this system, being honest. हमने उसको प्री सीजन में भी देखा, हमने उसको इस वाली विंबलडन वाली गेम में भी देखा. What happened in the cup game was, देखो हमें तो मैच दिख ही नहीं रहा था, कोई तो हमारा मैच भी नहीं दिखा रहा, इतने गंदे हालत हो गए हमारे. लेकिन स्टिल ट्विटर पे न्यूज आई कुकुरेया ने फर्स्ट हाफ में like 20 minutes into the game एक गलत पास खेली that went directly to the outside, and what Poch did was जा चिलवेल तू वार्म अप कर. Poch does not want him. That is a clear indication. The only concern the board right now has कि हम 60 मिलियन जो हमने दे दिए थे ब्राइटन को, अब वो कैसे पूरे करेंगे. The only concern also do you think they did a wrong thing by playing him in the this cup match? कप मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो गलत कर दिया पॉच ने. लेकिन ऑप्शन क्या था, ही वुड हैव प्लेड मार्टसन एज अ लेफ्ट बैक. अब पॉच लुक्स पूरा प्री सीजन आपने एक भी मैच एक मिनट भी नहीं खेला मार्टसन को एज अ लेफ्ट बैक. तो एक होता है ना, बिकॉज इट्स अ नॉकआउट गेम, स्पेशली जब हमारे पास यूरोपियन फुटबॉल नहीं है मुसाफिर भाई. दैट्स व्हाई आई थिंक प्रोबब्ली ही वेंट विद द सेफर ऑप्शन ऑफ कुकुरेया, बिकॉज इन प्री सीजन एटलीस्ट ही हैज सीन कुकुरेया. यहाँ मार्टसन को एक भी मिनट नहीं खेला, तो बट आल्सो शुड हैव गॉट दैट वे. also एक चीज है ना यार कि ये विंबलडन थी एंड इसके सामने आप you could have tried Maatsen in my opinion. अब नहीं तो फिर you're right. Yeah, exactly. And if you were trying to sell Kuku, you should have tried Maatsen, because अगर in case Kuku चला गया, चिलवेल को कभी भी इंजरी होती है, Maatsen is the only choice you have. Exactly. भाई सॉल्यूशन लेकिन मिल गया हमें, टेंशन ही लेने का क्या है. प्रभात ने सेलेक्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट लास्ट 10 घंटों में 10,000 प्लेयर साइन कर लिए हैं, तो विच दे ऑलवेज डू, बट इस बार कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं सडन से, और बोल रहे थे हमें पैसे नहीं है. कुकुरेया टू नॉटिंघम फॉरेस्ट, हू सेज नो? गाइस कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. स्पॉन्सर भी नहीं है.
शर्ट भाई स्पॉन्सर नहीं है ऐसा कुछ सीन था क्या कि लाइक बर्नली के साथ में डील एक्सेप्ट हुई थी, दैट्स व्हाई ही वाज कीपिंग हिम सेफ मार्सन? नो चल डील ऐसा आज कुछ नहीं एक्सेप्ट था हुई ना? है बर्नली के साथ, तो आज एक्सेप्ट हुई आज है ही हुई है आज। अच्छा, मतलब वो 31.5 डील मिलियन। मतलब बैकग्राउंड में चल रही थी होगा, इसलिए दैट्स व्हाई ही वाज ट्राइंग टू सेव मार्सन। इंटरेस्ट था हो सकता है। डेफिनेटली बट वेरी इंटरेस्टेड Maatsen फ्रॉम never क्वाइट अ said व्हाइल। yes. Maatsen always wanted to He's stay a at Stay at former Chelsea. Chelsea. player and he's been waiting to get a chance at Chelsea। वही आप इतना साल वेट करके आपको यार मिला चांस, फिर अभी हाँ, आप वो 2 वाला दिन सीन पहले है। PFA चैंपियनशिप टीम ऑफ द ईयर में आए हो, you were one of the best players in the whole fucking league, you need that step up. Why do you want to? And being honest, हम सबने बर्नली का 3 हफ्ते को गेम देखा है. Being a player right now, being a professional player right now, would you go and work for a team there? Considering the fact कि तुम्हें प्री सीजन में फाड़ी है, प्री सीजन में you were actually that good. one of the brightest players by the way। Yeah, Yeah. he was the one who started scoring for us. So I don't get the point कि why Poch wants him out. Poch I don't think wants him out, but हमारे board wants him out because Cobham को बेच के 100% profit मिलता है. Simply या said, एग्जैक्टली, मे बी हो सकता है। पता that नहीं is the यार, only मुझे तो thing. वही लगता है यार, एक जन को रखना चाहिए हमें। मतलब मैं बोला चालोबा, मार्टसन और गैलेगर के बीच में से मैं रखूंगा एटलीस्ट गैलेगर को, और वन ऑफ द अदर टू आई वुड से। आई नो नंबर ज्यादा है बट अभी इंजरी भी काफी ज्यादा है। आई थिंक जनवरी तक दे विल गेट गेम टाइम एज वेल एज बेसिकली देयर बी अ बैलेंस। जनवरी में इफ दे आर परफॉर्मिंग वेल बिकॉज दे गेमिंग गेटिंग गेम टाइम, वी विल गेट अनदर बायर इन माय ओपिनियन। लेकिन बिग अप टू एवरीवन यार, जो भी लोग यहाँ पर आए, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, दैट कीप्स द एल्गोरिथम गोइंग। Devesh, yes, with Amrabat coming in, Regulon ka defensive issue might be solved. Maybe Amrabat is someone who's like a proper DM. You have a point, but again, I have double thoughts about Higuain in my opinion यार। मतलब I don't, देखो जब मरीनो भी चाहता था back when Marino was there at the helm of Manchester United and he wanted Higuain very badly, तभी मुझे like seriously I was in double mind कि यार ये वो लेवल का प्लेयर मुझे लगता नहीं है कि हाँ ये टीम में घुसेगा खेलेगा। हैज अ बैकअप व्हाई नॉट, आई वुड से, बट ये फर्स्ट टीम प्लेयर मुझे नहीं लगता है। ही कैन प्ले फॉर द बॉटम ऑफ द टेबल, यस श्योरली ही कैन, बट द टॉप 6 आई इन माय ओपिनियन ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर व्हिच आई रियली ट्रस्ट विद, यू नो। जो मेरा लेफ्ट बैक होना चाहिए, इट शुड बी एदर लाइक द शॉ ऑन हिज डेज, ठीक है, बिकॉज शॉ का वो चलता रहता है, ऑन ऑफ डेज चलते रहते हैं, बट जब शॉ सीरियसली ऑन होता है वो टाइप का लेफ्ट बैक होना चाहिए। जैसा चिलवेल था लास्ट सीजन इन माय ओपिनियन, नॉट लास्ट सीजन, इट वाज बिफोर दैट, जब आपने यूसीएल जीता था, ही वाज वेरी गुड, ही वाज वेरी गुड, या चैंपियन लीग जीता था, he was very good. That kind of a left back should be playing for the top 6, not someone like even Cucurella was very good Brighton team में, but again जब हम बात करते हैं चेल्सी की, तो he was shadow of himself, and also right now when United was going, I was again like क्यों इसको ले रहे हो, बोली बात है। And to no, be Luis very Hall, honest, Nathan he is was right. We good let in go Luis Hall. Spain. Yeah, He was good in Spain. If you personally ask Higuain, me, yeah, surely but he was, Spain is a Sevilla very के लिए different ना। ball game to, yes, and it is a very different ball game to the Premier League. The yeah, first day he He's an came, attacking fullback, yeah. Really, if you ask me, he's a good attacking fullback. exactly. Defensively, positioning is an issue. लेकिन थोड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करनी है। आई नो चिराग, आप तो चिराग जाना तो बता दें मेरे भाई, हाँ जी, लेकिन जी, क्विकली वैसे ही। थोड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करते हैं क्विकली, एंड विल कम टू बारसा एंड अदर क्लब्स फॉर श्योर। लेकिन मतलब अगेन इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, इट्स एन अवे गेम। देखो साइनिंग्स इज वन थिंग, ऑफ कोर्स अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर अमराबात एंड रेगुलॉन, लेकिन द फैक्ट इज हैरी मैग्वायर स्टिल स्टेइंग। जॉनी एवंस को आपने साइन कर लिया है शॉर्ट टर्म डील। मतलब आई थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। yeah, मतलब of course, एरिक टेन हाग yeah, देखो knowing Dutch managers, I can see difficulty coming. नहीं, जो भी यूनाइटेड फैंस है, व्हेन इज सीइंग दैट ही इज नॉट पैनिकिंग, सीइंग ऑल दिस स्टफ, आई वाज लाइक उसको कुछ नहीं पता, सीरियसली यू हैव टू पैनिक, दिस इज अ सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है। आप में वो है कि भाई चलो ठीक है, कुछ ना कुछ करके निकाल लेंगे। अपन तो लास्ट सीजन भी ऐसा ही था, कितना भी हाथ पैर मारे अपन लोग, बहुत सारे मैचेस हारे थे, कहीं 6-0 से हारे, कहीं 7-0 से हारे, बट वी एंडेड अप 3 एट द थर्ड पोजीशन। आई नो दिस सीजन भी ऐसा ही कुछ होगा, विल बी एंडिंग अप इन द चैंपियंस लीग पोजीशन इन माय ओपिनियन, बट अगेन इट विल बी लाइक we'll getting a lot of banters and stuff like that, and ऐसे कुछ मैच आएंगे जहां पे आपको लगेगा भाई टैक्टिकली ये टीम लॉस्ट लग रही है आपको, बट कुछ ऐसे मैचेस आएंगे जहां पे मास्टर क्लास लगेगा व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। तो यार आई थिंक कहीं ना कहीं हमारा सब्स्टिट्यूशन बेंच I think ऑफ हाँ, मुसाफिर कोर्ट का, yes. हाँ, Yeah, आ गए, you're आ fine. गए। am I back? You're back. ठीक है। Please continue. ओके, सॉरी, लाइक आई सेड, मुझे लगता है कि स्ट्राइकिंग पोजीशन में वी नीड अ प्रॉपर बैकअप। मार्शल आई डोंट ट्रस्ट हिम। हॉजलैंड की अगर बात करोगे तो भाई Exactly. नया बंदा है,
नया बंदा है एंड ही इज जस्ट व्हाट 19 एंड स्टफ. तो यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है. रैशफोर्ड इज लुकिंग शेड ऑफ हिमसेल्फ. यस, राइट साइड में एंथोनी वी हैव गॉट. यार इंस्टेड ऑफ एंथोनी ना मुझे ऐसा लगा कि स्टार्टिंग के 2 मैच में एंथोनी के बदले अगर पेलेस्ट्री खेला था तो बहुत बेहतर होता. सीरियसली आई थॉट अबाउट इट. आई गिव अ थॉट बिग ऑफ कॉल वो, Yeah, मतलब and it's a big call and it's very direct. Anthony is like he gives you width. एक कोई आप बोल सकते हैं कि सामने वाली टीम जो है थोड़ी सी डिफेंसिव हो रही है तो उसको ओपन करने का Anthony is a very good player. But if you're talking about attack to attacks, Anthony is not that kind of player which should be playing. Instead of that we should play Pelistri. वो वाली बात है. And यार midfield के तो problems थे. I think Amrabat will will solve 50% of the problems, not 100% yet. बिकॉज अगेन कैसेमिरो जो लास्ट ईयर का कैसेमिरो था वो अभी दिख रहा नहीं. अगेन आई वुड से बहुत अर्ली है सीजन में, तो वही बात है. लेट्स सी यार. डिफेंस आई एम हैप्पी विद द डिफेंस, यस, बट अगेन स्विच ऑन ऑफ होते रहेगा. तो यार आई डोंट नो सीरियसली. बिल्कुल. तो भाई टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब डिफेंस की बात करें तो भाई टू बी ऑनेस्ट आर्सेनल हैव अ वेरी बैड डिफेंस एट होम फॉर व्हाटएवर रीजन. आई थिंक लास्ट फ्यू मैचेस में दे हैव बीन कंसीडिंग इन द फर्स्ट 2 मिनट्स. हैविंग सेड दैट मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तो रिकॉर्ड दिया भाई लास्ट मैच में ही कंसीडिंग 2 गोल्स इन द फर्स्ट 4 मिनट्स एंड दे वर अगेंस्ट व्हाट नॉटिंगहम फॉरेस्ट, राइट? और वो हम खेल रहे इस वीकेंड. That'll be interesting if what happens. लेकिन away form of Manchester United हम previously बोलते थे भाई it's actually good. In the last few months it's actually gone very bad. Away form. तो मतलब is it a case of purely क्योंकि captain last season was an issue, not reading too much into this season. लेकिन again Spurs वाला performance told. I know first half wasn't bad by the way. आप unlucky थे in my opinion the first half. लेकिन second half was quite poor, right? Even you will agree, Musawil bhai. So what is your opinion about that away record being bad, and should Erik ten Hag try something else in terms of system? क्योंकि like Klopp थोड़ा hesitant तो रहा है. वो पर्सनल चेंज करता है लेकिन सिस्टम चेंज नहीं किया, राइट? ज्यादा Because yeah, again I would say यार the kind of bench we have, अंकित भैया, even if you want to change the system, आपके पास options कहाँ पे हैं? Because you have the same ढाल वाले players हैं आपके पास में. तो मतलब आपका लिसांड्रो मार्टिनेज could play in a back three as a left center back. We can do that, but again we don't have Varane अभी injured है right now, लेकिन when everyone is fit I think you could go that way. क्योंकि आपके पास the problem अभी ये भी है ना कि यार for example इस मैच में भी लेफ्ट बैक डालो खेलेगा. I don't think यहाँ पर रेगुलर is ready to play start. No, he's not. It will be Dalot again in my opinion. Maybe हो सकता है कि थोड़ा सा रश करके स्टार्ट दे दे रेगियन को, because there were news that he might start against Arsenal. Okay. Because मैच वैसे भी संडे के दिन है, तो why not? We can do that. Guys, anyone in the chat, if you can just check, or if you know, has Reguilon played any minutes with the Spurs? I don't think so. This season? I think this season नहीं खेला ना. Hardly even preseason खेला. I doubt if I saw. मतलब not in the Premier League in my opinion. Highlights में तो. But anyway, अब again वो हो सकता है throwing in the deep end ना, मतलब लेकिन डालो also, like to be honest, against if you consider Arsenal, let's be real, the main weapon is what? The main weapon is Odegaard Saka का partnership in my personal opinion. I think that's where the main creative force is वहीं पर. Exactly, and they operate in that kind of areas. They operate in that kind of areas. They love that kind of areas, right, to operate. And it's going to be a very tough match in initial moments में. And अगर हाँ हम लोग अगर composure लाते हैं starting few minutes, then we can handle the match well. In my opinion, last time out at the Emirates Stadium, we played very good. It was unlucky that we got उन्होंने last moment में score करके वो match को मतलब उलट फुलट कर दिया था. But again I would say this time out यार देखो last time it was like ठीक है यार निकाल लेंगे. इस टाइम थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो फॉर्म में थे प्लेयर्स वो आज या फिर अभी ये मोमेंट में फॉर्म में नहीं लग रहे हैं. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ मैच अगेन आई वुड से दैट. एंड जैसे अभी सिस्टम चेंज करने की बात हो रही है, लाइक आपने बोला कि बैक थ्री खिला सकते हैं. अगर बैक थ्री खिला सकते थे हम लोग या फिर ETH वुड हैव दैट बैक थ्री सिस्टम इन हिज माइंड, तो हैरी मैग्वायर कुड हैव बीन a starter for Manchester United because Harry Maguire in the back three is very good. You have a point. Exactly. Definitely. So the coach doesn't have that idea in his mind right now. He thinks like कि भाई अपने players उस formation में work नहीं करेंगे, तो वही बात है. तो I don't know about the combinations, what combinations he will be playing against Arsenal, but I don't see a vast change against Arsenal. Yeah, it will be the same kind of play. It will be nothing massively changed. And the point is, when you're playing Arsenal now, from that left side, from the right side, you have the biggest Arsenal threat, that is Bukayo Saka. Whatever happens, that game will be decided how Bukayo Saka plays.
So Exactly. you have लेकिन to be very चिराग much sure about लास्ट that. वीक तो मतलब पीपल आर नॉट सेइंग यही चीज है ना, अगर कोई और प्लेयर करता वो हेटेड ना, वुड हैव गॉट अ लॉट ऑफ स्टिक. फर्स्ट गोल जो आया था ना फुलम का, इफ आई रिमेंबर राइट, वाज बिकॉज़ ऑफ बुकायो साका's No, I pass completely back. agree. No. See, when Bukayo Saka makes a mistake, I'll take up that. But when he is attacking, Of right course, now one of he the is one of best the youngsters. best players in the या world एग्जैक्टली. एंड भाई on the क्लच right है ना side. वो ठीक है, मिस्टेक कर ले, एक दो तीन मिस्टेक्स वो कर ले मैचेस में. ऑफ कोर्स दो तीन मिस्टेक से तो गोल्स तो नहीं आएंगे. सपोज एक गोल आ गया, बट ही इज काइंड ऑफ अ क्लच प्लेयर कि भाई वो ही पुट्स इन बैंगर्स. वी ऑल हैव सीन Exactly, दैट, राइट? जो टाइप ऑफ exactly. गोल रैशफोर्ड ने मारा था फ्रॉम द राइट साइड एज लेफ्ट साइड, उसने सेम गोल मारा था फ्रॉम द राइट हैंड Right साइड. side. Yeah, exactly. So it's very एक uncertain situation है about Bukayo Saka in my opinion. He's very good. And अगर उसको उसके अगर passing lines कट किए जाए तो we can limit him. But अगर नहीं भाई, उसको अगर free flow खेलने दिया जाए, हम लोग अगर ओडेगार्ड के बारे में बात करेंगे और Ah, अगर ट्रोसार्ड के बारे में ही हम लोग चेक करते रहेंगे, then he'll be मैं making मैं एक havoc. नाम लेना चाह रहा हूँ, जनरल ट्रोसार्ड इज इन द हाउस यहाँ पर. ट्रोसार्ड का नाम लिए भाई. टू बी ऑनेस्ट ये एक पिटिशन है टू स्टार्ट ट्रोसार्ड एंड इवन एंकेटी, आई वुड से ओवर हावर्ट्स. बट आई अच्छा. थिंक आई वुड अग्री, मोस्ट ऑफ द आर्सेनल फैंस आर सेइंग, आई नो कुछ ज्यादा ही What हेट मिलता है बहुत Yeah, जल्दी. Howard, what do you think Howard's main position is in Arsenal? I mean, like, what kind of a role? I just want to know this answer from Havertz rather than us. Does he know That's that? because, see, even though So I don't follow when I so met closely Havertz, I Arsenal asked or him that Chelsea. question. वो edit कर दिए थे मेरे भाई. I asked him. He's like, I'm happy. वही diplomatic answer. I'm happy to play where the coach wants me to play. But at the end of the day, I like to win games. I like to score goals. तो भाई वो तो लेकिन diplomatic वो answer होगा ना बोलने की भाई बहुत एकदम. क्लच है प्लेयर, लेकिन नहीं करता है enough goals. We all know he misses I many mean, like, things. I love the way he played in that. It was, I think, final में बहुत लोग बोलते हैं कि he played very well. I didn't like the gameplay he played. वो तो एक गोल मार दिया था उसने. That's why I kind of नहीं said लेकिन हाँ ठीक है. I'd चैंपियंस rather लीग में tell अच्छा you, खेला था, पूरा Champions चैंपियंस League लीग में था कैंपेन में क्या? अच्छा खेला था. We were going for a front three, जिसमें Yeah, बहुत डायनेमिक फ्रंट थ्री थी. That was Mason Mount, Havertz and Werner. He Warner. yeah, had two best runners alongside him. Whatever yeah. happens, Werner और Mount भागते रहेंगे पूरी पिच पे. भाई रियल हाँ मैड्रिड वर गेम यार, क्या गेम खेला यार, मतलब हाँ टू बी वही. ऑनेस्ट. लेकिन 2 साल हाँ पहले की बात है अगेन. हाँ एग्जैक्टली वो 2 साल पुरानी हो गई, लेकिन द वे ही वाज प्लेइंग इन दैट फ्रंट थ्री ना, दैट इज वेरी डायनेमिक, बिकॉज वो बहुत फ्री फ्लोइंग था. उसमें आपको पोजीशन बतानी नहीं थी, जो जहाँ खेल रहा खेल लेना. वो वाइब्स में खेल रहे थे, सिंपली अच्छा. सेड. But Again. being honest, in the Real Madrid game as well, he was getting that opportunity to play on the shoulders of two runners. But यहाँ नहीं मिलेगा वो. If you are playing as a striker, you need to finish aerially. If you are playing Yeah. outside the box, you need to take shots outside the box. You can't be sitting just in the box. He also does not know कब box में जाना है कब नहीं जाना. He needs that mentality with him. आप उसको जर्मनी के लिए भी देखोगे, when he is playing with that Leroy Sané and Nabry या फिर you can say a Werner alongside him, he's very good. कौन सा वो लास्ट ईयर गेम था when he came on and scored double goals एक साथ 2 गोल मैच उसने गेम जिता दी जर्मनी को. Yeah. You need to put that in I his kind of mind. understand, yeah. I kind of understand, yes. And Messi इस गोट ने वो एक कमेंट डाला है that I seriously I also don't understand कि भाई CFC ने उसको 70+ मिलियन में कैसे सेल किया, मतलब it's like selling a Maruti वो 800 तो for the price of Ferrari. आर्टेटा का क्या है ना, आर्टेटा doesn't see form at all. He just sees a player profile and goes for it. वही I think a criticism Arsenal fans Sometimes it does bite back. I am not seeing Odegaard में he got, he struck gold in my opinion. He did. In terms of Trossard, he was very good. I mean, like ब्रिक्टन के I think कुकू छोड़ के यार सब प्लेयर्स जो हैं कहीं भी गए तो अच्छा खेले हैं, ऐसी बात नहीं है. कुकू was a downfall, yes, but maybe क्या बोलते हैं वो सिस्टम में बैठ नहीं पाया, हो सकता है elsewhere he'll be very good because I kind of see him as a good player, yes, but वो चेल्सी के सिस्टम में बैठ नहीं पाया, मुझे ऐसा लगता है. इट विल बी अनफेयर इफ आई से कि भाई नहीं खासी प्लेयर नहीं, अच्छा नहीं है, बिकॉज ब्रिक्टन में भाई ने कमाल करके दिखाया था. Yeah, definitely. भाई यहाँ पर आई थिंक चिराग हैज टू गो. सो चिराग, बिफोर गोइंग ए क्विक, आई वांटेड द क्विक लाइनअप इफ यू कैन इन अ मिनट. Chelsea. विल कम बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन 1 मिनट में बोल दो चेल्सी अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, व्हाट इज योर लाइनअप एंड व्हाट इज योर प्रेडिक्शन. I'm going with the traditional back four: Sanchez, Gusto, Disasi, Colville. या फिर Thiago Silva returns, I'm happy with Thiago Silva. No, he didn't play in Thiago Silva, Colville. Left back, I'm going for Chilwell. I'm going for a traditional back four. At I home, don't want anything new. With a Caicedo, Enzo. If Gallagher stays, I'm happy with Gallagher playing. नहीं तो some you can Uguchukwu played well for me. I can have him as well. And the left wing, I'm willing to try Ian Maatsen for the
one time, but I still think we'll go with Sterling on the left. Right में Madueke खेलेगा because Madueke कहीं ना कहीं यहाँ पे clutch कर सकता है and up top Jackson ही खेलेगा. That will be the situation. ओके, आई डोंट नो इफ यू गाइस अग्री, बट आई थिंक नॉटिंगहम फॉरेस्ट के साथ हमने जीता नहीं था दोनों मैचेस लास्ट टाइम, दोनों ड्रॉ हुए थे. तो दोनों आई ड्रॉ करे थे भाई. थिंक और भाई ओला आई ना एज इन नॉटिंगहम फॉरेस्ट, नॉट जस्ट हडसन ओडॉय इज Even गॉन. Callum Hudson-Odoi, yeah, exactly. Yeah. हडसन ओडॉय तो गया ही, लेकिन वो शायद खेलेगा नहीं, लेकिन ओला आइना एक्चुअली खेलेगा. फॉर पीपल हु डू नॉट नो, ही इज एक्चुअली वन द प्रीमियर लीग विद चेल्सी गाइस. And ओला 4 घंटे आइना बाद तक पता नहीं कौन कौन से 2-3 और जा सकते हैं with Nottingham Forest spending. बट देखते हैं क्या होता है. और यार बस वापस स्कोर मत करना वापस से. लेकिन भाई चिराग ओपी हो I'll जाए इन see द you चैट guys. एंड एवरीवन. फुटबॉल Great talking to you. Yeah. Great talking to you. Bye bye. मिलते वापस. Thank you. Bye. भाई वी आर बीइंग जॉइंड बाय अनदर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन और मे बी अनदर आर्सेनल फैन इन अ फ्यू मिनट्स. तो भाई आ जाओ भाई. नेथन आपको मैं भेजा हूं, लिंक भेजा हूं. नेथन, डेफिनेटली इफ यू कैन कम इन, ग्रेट ब्रो, ऑलवेज वेलकम. स्पोर्ट्स ऑन नेथन एज वेल. भाई अगेन बिग शाउट आउट है यहाँ पर प्ले मेकर इंडिया के लिए, और फुटबॉल मेडिको एज वेल एज ए फॉर आर्सेनल एंड स्पोर्ट्स ऑन नेथन को भी मैं कर रहा हूँ टैग राइट अवे. गिव देम सम लव एज वेल एज अस. भाई सब लोग जो भी लाइक नहीं दबाए, दबा दीजिए लाइक बटन. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. ये तो हम ले लेते ये वाला, फिर कुछ कमेंट्स ले लेते हैं भाई. मुसाफिर भाई, इफ यू डोंट माइंड, एक Sure. एनी एक्टिव लिंक्स और रूमर्स आ रहे हैं भाई. टाइगर बीस्ट आ रहे हैं भाई. टाइगर बीस्ट आप अपने मेंबर मोड हो यार. मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, स्टिक टू टॉपिक, विल कम टू एवरी क्लब ट्रांसफर, लेट्स नॉट जंप, क्योंकि फिर बहुत हैपेजार्ड होता है. हमें भी मजा नहीं आता, आप लोग भी मजा नहीं आता. तो आई बी स्टारिंग फ्यू कमेंट्स. मैं सबका दे रहा हूँ. आई कैन सी अ लॉट ऑफ बारसा एंड अदर क्लब्स, यू नो, के क्वेश्चंस आ रहे हैं. एल्बर्ट लोकोंगा जॉइंस लूटन टाउन ऑन लोन फ्रॉम आर्सेनल. चलो मैनचेस्टर आर्सेनल की बात करें तो इसके बारे में बात ही कर लेते हैं. डेडलाइन प्लेयर इज गिवन, ये तो होना ही था. Because let's be real, मैं surprised हूँ. Are you surprised as well, Musafir bhai, that Thomas Partey को Arteta is able to convince to stay? Maybe because Havertz का एक iffy start रहा है. Maybe they will go double pivot with Odegaard playing little bit up. That could be one way. लेकिन Thomas Partey eventually नहीं मिलेगा यार उसको game time. Surprise ना? देखो, eventually he won't be getting, sure, because last time out थोड़े सा वो हवा बना रखा था भाई पार्टी जो एकदम बढ़िया, but everyone he started to fail off, right? वो जो फेवरेट बन चुका था, suddenly we saw कि वो fading off and we saw a different kind of Arsenal playing. तो यार इस time out it's like safe, he's playing very safe here Arteta, and उसको पता है यार कि इस टाइम थोड़ा दिक्कत होने वाला है जो ट्रांसफर्स हुए हैं, and he needs a backup plan, and that's Partey. And also, Partey is a very decent player, I would say. Surely, I mean, like he'll help you out, Arsenal, in some games. भाई यही बोलते हो ना, एक साथ तीन आते, या तो एक भी नहीं आते, एक साथ तीन आते भाई. यूनाइटेड रोड ओपी हो जाएगा. वैसे मैं तो 5-10 मिनट में चला जाऊंगा, तो भाई बुलाओ अंशुमन भाई को. नहीं, अभी राइट अवे आ जाओ यार अंशुमन भाई, आप भी आ जाओ, टेंशन नहीं लेने का. आप भी आ जाओ राइट अवे, बातें बहुत ही करेंगे. मतलब अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल, द मैचेस ऑफ कोर्स, बार्सिलोना. ये सेरिया भी कवर करना है अपने को, काफी ट्रांसफर्स करने. तो भाई इसलिए लाइव स्ट्रीम करना बेटर लगा हमें, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड. एक सेकंड मैं दे देता हूँ. मीनवाइल अगेन, मतलब in terms of from Arsenal's perspective, again I would have loved Daksh to kind of be here right now. He'll be joining after a few minutes. It would be fun, yeah. But मुशाहिर भाई, मतलब what do you expect from them ये starting 11 में, और उनका approach क्या रहेगा? Because last match they drew despite opposition. आपका Fulham were down to 10 men. I know it's early days. Manchester United का कितना 6 points है in 3 games. And yeah, 6 points. Correct. Yes. And Arsenal have what 7 points. ठीक है. Right. At home at Arsenal, right? Abhi pressure is on them for this particular game. Tactically, what do you think? मतलब they will make some changes in terms of the personnel. Just Havertz की बात कर रहे थे. Do you expect Trossard to begin because आपका Varane is missing, right? For Manchester United, I believe. Of course, वहाँ पर Luke Shaw is already missing. तो right side में तो it's obvious that Odegaard और Saka वाला हमने बात कर लिया, that will be the upper kind of hand they will have. लेकिन आपके midfield में what do you think? Will they go for a Declan Rice Partey? क्योंकि technically it's a big game, right? Obviously. Yeah, of course. मेरे ख्याल से it will be something like that. Surely it will be something like that where Declan Rice and maybe Partey will start. और यार देखो, I think still Arteta will go with, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा है कि भाई Arteta वो सेम 4-3-3 से जाएगा, जहाँ पे जो लास्ट गेम में हमने देखा कि Havertz, Rice and Odegaard will play in the midfield and Trossard starting up front. I think मुझे इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं लग रहे. For some reason I think यार कि जरूर यही सेम लाइनअप होने वाली है. And maybe in middle of the game he might change his tactics. He will थोड़ा सा देखेगा गेम कैसा चल रहा है, कौन से साइड में जा रहा है, then he will
suddenly change all his tactics, something like that. But yeah, it will be Rice, Partey and Odegaard in my opinion. या फिर आप बोल सकते last time के जैसा it will be Rice, Odegaard and Havertz. अच्छा मैं चैट में देख रहा हूँ भाई. गाइस रिलैक्स गाइस, इट्स एट द एंड ऑफ द डे वी आर फैंस, इट्स अ गेम ऑफ फुटबॉल. यस, हम काफी पैशनेट हो जाते हैं इन गेम्स, आई अंडरस्टैंड. भाई ट्रांसफर विंडो में इतना पैशनेट आप लोग कैसे हो? मतलब इवन आई एम वेरी पैशनेट, लेकिन इतना कि यार बायर्न बदमाश गेम खेल दी, ये कर दिया, मेरी बदुआ लगेगी, यहाँ पर फ्रैंकफर्ट द वर्स्ट क्लब इन द वर्ल्ड. गाइस लिसन, क्या होता है ना, आप अगर फ्रैंकफर्ट के हो ना, तो फ्रैंकफर्ट के लिए कोलोमोनी मींस मोर टू कोलोमोनी गोइंग टू पीएसजी. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीएसजी, रिफात इज अ पीएसजी फैन, मैं बोल नहीं रहा वहां पर गलत है, लेकिन पीएसजी के पास ऑलरेडी गोंजालो रामोस है, एम्बापे है. आई नो रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि वो हमेशा आता है लास्ट फ्यू आवर्स में रियल मैड्रिड चल जाएगा, नहीं जाएगा इन माय ओपिनियन. आई विल बी, हो सकता है आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक इज गोइंग टू लीव. और आपके पास असेंसियो, कैंगनली वो सब साइन किया, आप लोग ब्रैडली हाँ बार्कोला exactly साइन man. किया. I don't think it's an issue. I know you want more the merrier, लेकिन रिफात पीएसजी में वही इश्यू था मेरे भाई. बहुत ज्यादा आपका ये स्टार ये प्लेयर ये जमा करना इज सीरियसली बोलूं तो ये मोर द मेरियर में चलेगा पीएसजी वाले. आई थिंक हाँ. जो उनके पास थी टीम उससे खेलते तो आई थिंक दे कुड हैव वॉन समथिंग हैज यूएसएल और समथिंग. बट अगेन आई थिंक यार ज्यादा ज्यादा इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं यार. अटैक इट्स वेरी फुल स्टैक्ड इन माय ओपिनियन. अगेन इफ यू वांट कोलो मुआनी टू कम एंड जस्ट सिट ऑन द बेंच, इट्स नॉट गुड राइट. आई मीन लाइक you have नहीं Mbappe over ये there, भी you have मतलब got बहुत लोग बोल रहे Ramos हैं over there. पीएसजी फैंस जो लोकल है ना, भाई बोल हम्म. रहे हैं कि यार क्योंकि वो फ्रेंचमैन है. ऑफ कोर्स हम डेम्बेले का तो नाम ही नहीं लिया भाई. डेम्बेले हाँ, Dembele is there, yeah, of course, yeah. I mean, आई नो like हिट seriously. एंड मिस है, लेकिन दैट इज वेयर लुइस एनरिके द कोच कम्स इन यार. मतलब आई थिंक कोलोमोनी गोइंग देयर, पर्सनली स्पीकिंग इट विल बी अ बिट टू मच, लेकिन ठीक है. मतलब आई नो इट्स वेरी क्लोज, अब देखते होता है कि नहीं होता है. गाइस देखिए यार, हम लोग 50 मिनट से लाइव है कॉन्स्टेंटली यार. 100 पीपल आर वाचिंग अस एटलीस्ट, ठीक है. कम ऑन, 100 लाइक्स तो बनते हैं यार, इतना तो बनते हैं. कंजूसी क्या Yeah, yeah, चीज की यार, exactly, सब लोग. man. वी आर चलो. कमिंग टू एवरी क्लब, लाइव स्ट्रीम है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए. वी कैन नॉट जंप गन, तो कहीं आपको भी मजा नहीं आएगा, हमको नहीं आएगा. सिंपल एज दैट. सो वी आर कमिंग टू एवरी गेम, एवरी क्लब एब्सोल्युटली. यहाँ पर थोड़ा गेस्ट हमारे पैनल को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए. व्हेन दे आर देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, आई वुड लाइक टू स्पीक टॉपिक्स व्हिच इज रिलेटेड टू देम. आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड फिर दे विल गो एंड देन we'll have a rotating panel for sure. But we are having another Manchester United fan in the house. Nathan, what's up man? What's up? How are you? Everything is good. How's everybody? Yep, एकदम बढ़िया, not एकदम too बढ़िया. bad. We are a little bit nervous though, especially for the Cobham boys at Chelsea. Looks like some bids have come. We might get tempted for FFP reasons. Lekin, congratulations, Nathan, again. I just said to Musawid Bhai and Manchester United fans, finally getting your Amrabat and Regulon, man, out of all the people that you've No, got. no, 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 no. Don't do that. Don't do that. But why Nobody didn't on you go for this guy? Why didn't you go for Gravenberch, you feel? nobody in the chat even believes that. Come on, like, come on. So Let's not Donny do van that. de Beek is staying in Manchester United, is what I understand. Yeah, yeah, he's. Why? Harry Maguire, Donny van de Beek, Johnny I mean, Evans. we have that culture at Manchester United right now, right? That we Yes, keep no our culture. deadwood with us. No, there is No a culture culture. of keeping the deadwood with us for a long time. It's been the culture of United, like post Sir Alex era. So it's simple But as that that. is what Eric Ten Hag was ruthless, I thought. ना वही चीज हम expect कर रहे थे उससे थोड़ा सा, लेकिन Okay, maybe okay. everything was But I'm that's not sorry. I'm biased, sorry to right? cut you off, Ankit. I have to cut you off straight away. Please. Apologies. Eric Ten Hag's not ruthless. This entire season, he has been giving Ole Gunnar Solskjaer like interviews. Notice the wording from last season's first 4 games. Notice the wording from this 4 season. Ole Gunnar Solskjaer was raked through the coals because he was defending the Glazers. Now Eric Ten Hag defends the Glazers. Give him time. What is the difference between Ole Gunnar Solskjaer and Eric Ten Hag? Because Ole Gunnar Solskjaer did not win a trophy, but we went undefeated in a year. We finished second and third. Our players that are currently playing like crap actually played well. Those same players. He might be a tactician, but he, just like everybody I've noticed recently, have their favorites. What is the difference between Ole Gunnar Solskjaer and Harry Maguire and Anthony and Eric Ten Hag? Let me tell you right now, nothing. Zero difference. They're going to die on that sword no matter what happens to them. Doesn't matter. I have done every preseason game watch along.
Facundo Pellistri, Jadon Sancho, and Alvaro Fernandez are the best 3 preseason players we have. I don't give a shit about quality. I don't give a shit about what everyone else won somewhere else. I don't give a shit if they were world class. None of that matters to me. Based on 2023-2024, first game was played. Alvaro Fernandez gets the first assist. Facts. Our kids played better than the starting 11 every he's left single back, game. Right? Alvaro Fernandez. Yes. Every single game, our kids played better than the starting 11. Every single game. I've been talking about debating the same gameplay. thing about Cobham. Why get rid of Maatsen and he's one of the best? Lewis Hall, Ankit bhai, we spoke about this way before a transfer was made. I told you I like Lewis Hall when I saw him play against United. Correct. Unbelievable. Stupid decision. I'm sorry. I'm sure everyone loves all the signings coming in. I would Stupid like to decision. quickly just counter. Because Chilwell will get injured, unfortunately. No, Nathan, listen, guys. Lewis Hall wasn't a case of only Chelsea selling him. You need to understand this. Lewis Hall, see, sometimes we don't realize that when transfers take place, it's 2 sides. In fact, 3 sides who have a say. Yeah. Player himself basically preferred a move to Newcastle United in particular. Why? Because of Newcastle United being in the Champions League. Why? Because he is a Newcastle United fan. I know previously even Luke Shaw. I remember those days. Sancho days. I remember those days. Let's not do the Mbappe thing, right? Where he has a photo of but every Lewis Hall jersey, difference is he's still being a very, fan of very every young. club. And the fact is, even if he stayed, he's it not makes going sense to to play me. over Yeah. Chilwell. He's not Yeah. going to play Agree. over 50 million signed Lavia, 100 million signed Caicedo in midfield, which is either player he can play at, right? So that's what I'm saying. But I think it might turn out to be a bad idea. I mean, the way of Boli course, spends money, you can it just will buy be a him ba- back. You can just buy him back. That is the business at Chelsea and Manchester United is different. हम यहाँ पर products develop करके बेचना हमारा business है. Unfortunately. No, listen. It's I've been a told scenario, you, right? he's It's been a excellent. scenario. And speaking of youngsters coming in, Cole Palmer. Oh my God, what a deal! What a deal! Cole Palmer is going to do very well. No, No I mean, doubt like, about it. seriously, if you see at the management, if you see at the whoever is there has a technical director or whatever it is, they have been very professional in their approach in terms of selling players, in terms of buying players. You have no, they did, in my opinion, you have bought in players, yes, a lot of players post your last owner. But again, I would say if you look at Manchester United, you can't compare Manchester United to Chelsea and Arsenal or Man City right now, because we are doing the same thing post 2013, and we right now, like my brother over here told that ETH is doing the same thing what Ole Gunnar did last time out. I'm like, I would agree 75% right now, because जो भी interviews हुए हैं, like seriously man, I was expecting more ruthless from him. But again, he blamed the midfield for our. He blamed the defense and attack for the Tottenham loss. I mean like seriously, yeah, I don't know why he's doing that. I mean, seriously, I was thinking it is something else of him, but yeah, I maybe it's just a start of something, you can say. But I'm expecting a lot of good things in coming days. And we sold Mark Gerardo today. We don't have right backs. We don't have right backs either. We sold Mark Gerardo. We are playing both our right backs. भाई मैं वेट कर रहा हूँ चेल्सी के लिए रैंड करने के लिए, मिलान के लिए रैंड करने के लिए. यहाँ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के यार जनता भरते जा रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है यार. Ankit, see, you know, I've been sitting quietly. I don't like, as you know, I only like to do watch-alongs. I like to enjoy my community. I like to chill. Any game, whatever the game is. Looking forward to Luton Town at the Kenny today. It's a very weird statement to say, but I am looking forward to it. Facundo Pellistri is a right winger in a position where Anthony's playing like crap and Ahmad's not going to be match fit till New Year. Alvaro Fernandez is a left back who played one of the best preseason players. We don't have a left back at the moment. 0 left backs. Dallo is a right back. He can play left back, whatever. Then we don't have right back cover. So I'm just going to keep our right back separate. Alvaro Fernandez can't get a sniff in. Now here's my problem with that. We are playing Sergio Reguilon 120,000 pounds a week. Are you honestly trying to tell me he can do better than Alvaro Fernandez? And if he can do better than Alvaro Fernandez, how long can he do it for? Because it ain't going to be the whole season. I'll tell you that much. 127,000 Annie. It's 57,000. Bro, he's not worth 5 rupees, dude. What are you talking about 57,000, dude? We just loaned out Brandon Williams, dude.
Alvaro Fernandez and all is fine, but practically if Alvaro gets injured, I will be very upset if we let Alvaro go on a loan right now. Then it, No, they were going to send him to Granada to do what? Eat paella? yeah, exactly. What is he going to do in Granada, dude? At this point of time, if we have brought in Reguilon, I am not worried about that. I will be fuming if we let Alvaro go, even on a loan right now. Because then again, it won't make any sense. Because you brought Reguilon to be a backup, to have a body, and then you want body that you already have, you get rid of that body. So it makes no sense to me. And Facundo Pellistri to Sheffield, so what? So he can learn how to make cutlery. What the hell is he going to do at Bramall Lane? He's not going anywhere. He's staying. कहाँ जा रहा है वो? एक सेकंड there was a link. There was I wanted to cry. अंशुमन आपका आवाज नहीं सुन रहा है ढंग से So what's he going to give high fives to Ollie McBurney on the bench? Yeah, he's staying. Yeah. He's not going anywhere. I think if you really look at the game right now, what Manchester United are planning against Arsenal, what do you really think? Who will play in the left? Because I think only two concerns right now. I think it's a left back and it's a right wing, right? And if suppose you are giving the selection up here, like seriously, left back पे किसको खेलना चाहोगे? Reguilon or it will be Alvaro? Neither of them. That's Okay. what we play. And what about the RB is like एक Aaron सेकंड Wan-Bissaka, like, अंशुमन your voice is an issue. You might have to check your mic. Mike को बोलिए Play right back and आवाज नहीं आ left रही. back. no, it's नहीं, like stuttering. echo it's ठीक से नहीं आ रही, echo हो रहा है. loud enough नहीं है but सूरज इतने मजा आ गया रैंड देख के भाई अभी तो खाली मैनचेस्टर यूनाइटेड शुरू हुआ अभी तो बाकी क्लब्स का बाकी है तो होल्ड ऑन गाइस एब्सोल्युटली लेकिन हां मुसाविर भाई प्लीज कंटिन्यू No, like seriously, we can't suddenly implement Reguilon. It's a no-brainer against Arsenal, especially. Again, if you talk about Alvaro against Arsenal, it's going to be a very bad thing, to be honest. It will be like a murder on the left back. Alvaro is not ready for Arsenal, seriously. And we have what? Dallo again. We will be playing Dallo in my opinion. right? Yeah. And what about Anthony? Do you think Anthony should start against Arsenal? आर्सेनल के अगेंस्ट तो करेगा मुझे तो उसको ड्रॉप करना था अगेंस्ट क्या बोलते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट अगेंस्ट आर्सेनल इज नॉट गेटिंग ड्रॉप Yeah, it's like same. वहां पे हमें उसका डिफेंसिव पोर्ट्रेट चाहिए अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट वहां पे उसको ड्रॉप कर देना था कोई दिक्कत नहीं है आई एम नॉट इन फेवर ऑफ प्लेइंग एंथनी इन एवरी गेम बट हां जहां पे तुम्हें डिफेंसिवली बिकॉज़ आवर फुलबैक्स आर रबिश आवर फुलबैक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर गार्बेज ठीक है एक से अटैक होता है एक से डिफेंड नहीं होता मतलब हाफ को प्लेयर्स लेके बैठे हुए हैं जोराडो का टैलेंट बेच दिया 1 मिलियन में नहीं मिला होगा उसका 1 मिलियन 1 million Jorado, 1 million Ethan Ladd, who was supposed to be the heir apparent to the position, 1 million Zidane Iqbal to Utrecht. What the hell, yeah? 9 million for Kovar and spent 40 million. मैं ट्वीट देखा अंशुमन का ही कि भाई हम 35-40 मिलियन में बेच रहे हैं मैं वही मुसाविर भाई से आई वाज डिस्कसिंग द सेम थिंग सीरियसली सेम कि भाई मतलब अपने 10 प्लेयर इनका एक प्लेयर जा रहा है भाई और फिर भी पैसे बच रहे हैं इनके पास में मुसाविर भाई देखो सिंपल से बात यही है पीपल नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीम जिसके पास स्ट्रक्चर है एंड एक टीम जिसके पास ओनर है प्रॉपर उससे तो कंपेयर करना बंद कर दे compare ourselves with the likes of जो इटली में बिल्कुल सड़े गले क्लब्स नहीं है ठीक है उनसे कंपेयर करो when it comes to that's what I said अंशुमन भाई that's what I said मैं बोला कि अभी यूनाइटेड को you can't compare with मैन सिटी टॉप 6 का छोड़ ही दो यूनाइटेड का people come in and they are like window is the 2 out of 10 मैंने बोला ग्लेजर्स ओनर्स है ठीक है और सपने देख रहे हो शेख के ठीक है जो मिला that was bonus यार क्या बोलते हो जो मिला वो बोनस है बोनस छोड़ो 4 प्लेयर लाके दिया दे लाइक यार तो डीबो नहीं आया कुछ लोग तो अरे भाई एम्बापे ला सकते थे मैंने बोला क्लब बिक जाएगा ठीक है एम्बापे आ सकते पता नहीं लोग कहां से कौन से नशे मार के क्या फूक के बातें करते हैं उनको खुद को नहीं पता वो अंशु भाई थोड़े कैसे हैं कि नए फैंस हैं थोड़े कैसे हैं ओल्ड हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम दिस क्लब बट वी ऑल नो द रियलिटी ऑफ दिस क्लब राइट इट्स बीन लाइक दैट इट्स लाइक मेरा पहला कैसा था ना अंशुमन भाई पहले कैसा था अपना आई थिंक आप भी ये चीज से आप ये होगे कि यार अपन जब भी दूसरे स्ट्रीम में जाते थे वी यूज्ड टू फाइट फॉर द क्लब राइट नाउ इट्स लाइक मतलब वी आर फीलिंग लाइक क्लाउन्स राइट आई मीन लाइक जो आप हायरार्की को देख रहे हो जो चीज चल रहा है टीम में राइट
It's like अभी you can't even defend, man. ये डेल आउट रॉबरी हो रही है आपके साथ में. You need to एक होता है कि यार you love your club, fair Yeah. enough, but you cannot be a deluded fan. Yeah, exactly. Exactly. ट्रोल बन जाता है. ट्रोल अगर बनना है तो यार फिर तो जाके बोलो ना यार कि रोनाल्डो मेसी तो चूतिया हैं, साला नेमार इज द गोट. ठीक है, जाके बोल दो. वो बोलिए. तो फिर अगर वैसा ट्रोल बन के बात करने है तो बोल दो कि भाई पेपे वाज अ बेटर साइनिंग देन रोनाल्डो, ही जस्ट डिडंट क्लिक फॉर हिम. मतलब बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हो ना यार. लोग आके 100 गालियां देंगे, तुम्हें 500 व्यूज मिल जाएंगे. ठीक है, अगर वो करना है तो फिर. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड टू रियलाइज कि भाई you cannot compete with the likes of City, Liverpool in terms of the way they do their transfer business. That's a fact, yeah. ठीक है, हमारे यहाँ DOF का सिस्टम नहीं है. मूडा को लोग DOF बोल देते हैं. अरे काहे का DOF है वो? काहे का? Just imagine DOF going to Barcelona. सारी डील सब कुछ हो चुका है. साला प्राइवेट प्लेन लेके गया वो बार्सिलोना, वापस आ गया लंच करके. Had a good meal. Just imagine. तो अपने बारसा भाइयों की आदत है यार, मील खिला के भेज देते हैं वापस. ना सीरियसली मैन. और उसका रफीनिया का हुआ था लास्ट सीजन. We have fallen so much. We agreed on a fee with Barcelona. ठीक है, हमें तो फ्रेंकी डियोंग को मनाना था ना. ये साला लपोटा के साथ खाना खा के आ गया वापस. अरे लपोटा उसकी लुगाई थोड़ी है कि लपोटा के साथ खाना खाएगा और उसके बाद फ्रेंकी डियोंग बोल देगा कि अच्छा ठीक है. टॉड बोली को ब्लेम करो उसके लिए भी. मतलब कुछ भी नॉनसेंस. ये ऐसे ही मुफ्त के. एक तो साला ग्लेजर वो क्या ही बोल रहा है, गाली देने का मन नहीं करा. आपका चैनल है भैया, बट ये साला हरामजादा ये हमारे नहीं दो. ठीक है, फ्रस्ट्रेशन निकालना जरूरी होता है कभी-कभी. तो हमारे ऊपर फाड़ गया. ठीक है, मतलब उसके प्राइवेट जेट का पैसा भी यूनाइटेड देगा. कल को साला टॉयलेट पेपर भी मंगाएगा तो यूनाइटेड ही पैसा देगा. ठीक है, सीरियसली अंशुमन भाई, डू यू रियली थिंक कि अपन जो है प्रीमियर लीग में वन ऑफ द वर्स्ट रन क्लब है? वर्ल्ड की बात करो. प्रीमियर लीग में सैंपल साइज छोटा मत करो. नॉटिंघम फॉरेस्ट की औकात अभी हमसे ज्यादा है. नॉटिंघम फॉरेस्ट बोल रही है यार 4-5 प्लेयर से क्या होता है भाई, कम से कम 20 पर विंडो. ठीक है, अगर 7-8 नहीं भी चले तो उनको फेंक देंगे जनवरी तक, कोई दिक्कत नहीं है. FFP क्या होता है? I seriously never thought back in 2013 अपन 10 साल बाद अपन ये कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे. सीरियसली मैन, इंटरेस्टिंग. नहीं फॉर श्योर यार. भाई सॉरी, मेरे को जाना पड़ेगा यार. मुसाविर भाई, आई नो यू बीन वेटिंग भाई. बिग अप टू मुसाविर भाई. अगेन गाइस, मैंने सभी चैनल्स को टैग किया है भाई. टाइटल में फिट नहीं हो रहा था भाई. डिस्क्रिप्शन में पहले लाइन में आपको मिलेगा. प्ले मेकर इंडिया, द यूनाइटेड रोड, स्पोर्ट्स नेथन, ऑफ कोर्स यहाँ पर फुटबॉल मेडिको, ए फॉर आर्सेनल सब है. तो पीपल चेक आउट प्ले मेकर इंडिया. काफी अच्छा कंटेंट करते हैं मुसाविर भाई. थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच. एंड भाई रेगुलर आ रहे तो होपफुली वी विल हैव लॉट मेनी अदर श्योर अंकित भाई. एंड थैंक यू सो मच यार इनवाइट करने के लिए. वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कोलैबोरेशंस विद पीपल लाइक यू मैन. थोड़ा सा नॉलेज वगैरह. नहीं, आई अप्रिशिएट यार. थैंक यू सो मच अगेन. एंड नेथन भाई, थैंक यू सो मच यार. I think first time मेरी और नेथन भाई की मुलाकात हुई है. Oh yeah. We'll chop it up after this donkey transfer window is over. Yeah, sure man, sure. Yeah. And Anshu bhai, thank you so much यार. People are literally waiting क्या transfer window over होगा भाई, हो चुका. We're done, dude. We were done at 3 in the afternoon today, man. Yeah. Okay, thank you so much. People are going to come in, dude. Now no one's coming in, dude. Take care. Big up to Playmaker India. मैं तभी बोल रहा हूँ, people need to shorten their expectations. ठीक है, उनको अभी भी लग रहा है कि ये यूनाइटेड 2010 वाला है. सर एलेक्स जाएंगे, जिस प्लेयर पे हाथ डालेंगे वो सर एलेक्स मेरे माई बाप, तो वो बोल के क्लब में आ जाएगा. इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट. हमने ओनाना साइन कर लिया भाई, हमने. ठीक है, मेसन माउंट पे 3 लोगों पे 3 गेंद के बाद लोग बोल रहे हैं भाई वर्थ साइनिंग. इस हिसाब से तो फिर भाई क्या ही बोलूं मैं. ठीक है, चलो एनीवे ये चलता रहेगा यार. और भी क्लब. अरे संकेत हमेशा यार, मतलब अपने घर की बात है यार. अगेन इन द कम्युनिटी नो इट वेरी वेल. अगेन डू चेक आउट देयर चैनल्स एज वेल. नॉट जस्ट दैट, हम तो हमेशा बुलाते हैं यार, मतलब बीट अंशुमान, बीट नेथन, बीट मुसाविर भाई. जस्ट दैट द टाइमिंग, द डेट वाजंट फिक्स्ड, बट एनीवन इन द कम्युनिटी वी ऑलवेज ट्राई. समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना संकेत, दिस फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग ना, वी ऑल लव टू डिस्कस एंड ऑफ कोर्स टेक योर ओपिनियन एज वेल. As a creator sometimes आप लोग maybe do not get a chance to think like that. क्या होता है, the creator at that point or that day may not be available.
maybe both of them might be streaming at the same time, so some things happen that way, or of course it depends on topic and other things, but कोई नहीं. यहाँ पर rather than being obsessed with Frankie de Jong for almost 2 transfer windows, United should have scouted some other players of similar profile, but ETH only wanted Frankie de Jong. I won't. लेकिन Frankie de Jong से मुझे बहाना मिलता है. Let's move on to Barcelona because breaking news. Okay, I'll just finish that. Messi is good. Messi is good. Ten Hag may have been obsessed on FTJ, but Ten Hag has also put a list of 10 players out there over the last 18 months, and we have got 3. So while you do have a point, I'm not going to argue with it because I'm very annoyed he did all that in the first place. Dealing with Barcelona the way Barcelona was moving that time last year was a very bad idea. There was a lot of chaos in a lot of leagues because Barcelona was just very aggressive in the transfer market. Kudos to your team for doing that. But for us, it was an absolute nightmare. And Ten Hag in, Ten Hag out, whatever you'd like to claim I am, that was a grievous error that wasted a lot of time on our half. And that is the L he has to take, whether you're Ten Hag in or Ten Hag out. He has to hold that L till whatever happens. Simple as that. Fair enough. So, bhai, of course, Joao Felix, we all have seen him in the Premier League, of course, in La Liga, once upon a time, the golden boy of Europe. Again, Barca fans would love to know your opinion. 2 Joaos, finally मैंने ले लिया यार, जो अपने spammer थे in the comment section, मैंने ले लिया आपको comment. Yes, 2 Joaos joining. मेरा personal opinion ये है, हम Arsenal की बात करते हैं, Manchester and Arsenal. I think Joao Cancelo was probably Arsenal's need because Arsenal are playing that inverted fullback on the left hand side for whatever reason, although मैं understand नहीं करता why, because Zinchenko is injury prone, he would have fitted there, but Barca getting him, so looks like they might go the 3-4-3 with him almost playing in the midfielder Cancelo. लेकिन अब Felix आ गया. अब again it's a loan deal guys, वो approval के लिए wait कर रहे थे, Fati going to Brighton. तो अंशुमन फेलिक्स को हमने देखा है, ही इज अ वेरी हिट एंड मिस, मतलब अच्छा लगता है प्लेयर देखने में, वाह क्या बढ़िया खेला ब्रो, लेकिन ही इज ऑलमोस्ट लाइक दोस फीफा बोर्ड प्लेयर्स वेयर यू नो काइंड ऑफ doesn't score you goals but he looks very good in the eye, he's very good skill wise. लेकिन बारसा में even if you see the fitment, बारसा yes वो थोड़ा डायमंड फॉर्मेशन खेलता है, जावी we know that's how it's going, but Pedri is there, pretty sure Felix is not going to start there, right? अब आप फाटी को हटा रहे हैं और ब्राइटन में आपने दिया है, ब्राइटन में कौन सा फाटी स्टार्ट करेगा क्योंकि वहां मिटोमा है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड द एंटायर डील. अंशुमन डू यू अबाउट फेलिक्स कमिंग इन? मुझे तो बारसा का कुछ समझ में नहीं आता टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब वो इतने कंफ्यूज्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब कल को अगर मैं बोल दूं कि यार आई वांट टू प्ले फॉर बारसा, इट्स माय ड्रीम, तो क्या पता मेरे को ही साइन कर ले, ठीक है, भले उनको मेरे बारे में पता नहीं. बारसा का ये मैं बोलता तो अगेन आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बारसा फैंस एज वेल, लेकिन फैक्ट इज जो मैसेज कोड बोल रहे कहीं ना कहीं पैसा का बात है, तो बारसा रियलिटी इज दैट बिकॉज़ आफ्टर सो मेनी लीवर्स दे डोंट हैव द मनी लेफ्ट. 9 out of 10 window. I will say it's 11 out of 10 window. 11 out of 10. Look at that. Look at those numbers. I can make fun of Barca fans. They can make fun of me. But Gundogan, Cancelo, as I said, Felix I don't rate at all. Okay, but Gundogan and Cancelo itself, with Niego and Romeo even. Okay, he has that experience that they need. That एक बंदा ऐसा जो कि बस जाए बस for tackles and everything. So. मेरे हिसाब से this Ingo is Inigo Martinez, the Bilbao center back. Yes, left center back / left back. Oh my god, wow. So no, I think for the amount of money that they have spent, I think Nathan is right. Well, it's a pretty good window. I'm not going to 11 out of 10 for nothing, dude. Oh wow. भाई अंजुम मैंने आपको hundreds of कर लीजिए यार प्लीज. Hundreds and hundreds of millions. Anshuvat by the hundreds and hundreds of this is also news coming in that Abde to Real Betis might come in. ये हो सकता है in the next few hours. I'm not sure हो गया है क्या अमृत? I'm not sure हुआ है कि नहीं. एक सेकंड, I'm just checking. Abde to बार-बार वो रीट्वीट कर रहा था अपना भाई फेब्रिशियो, आजकल बहुत रीट्वीट करता है. मैं सोचा मैं ही अकेला करता हूँ रीट्वीट, but he does a lot of retweeting. But हाँ, Abde इंप्रेशंस के पैसे मिलते हैं, मैं भी रिपीट करने लगा हूं आजकल. अच्छा मैं तो वो रीच नहीं किया. बट गाइस यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आता है, बारसा फैंस स्पेशली आप लोग बोलिए, इवन पैनल आप लोग बोलना, मेरा ये ओपिनियन था. देखो फेलिक्स आई डोंट कंसीडर हिम एज अ वाइड प्लेयर, ही इज समवन हु कैन प्ले
ऑलमोस्ट जो हम बोल रहे थे forward. चेल्सी फैंस आर लाइक व्हाई वुड वी टेक ESR बिकॉज फेलिक्स हमने ऑलरेडी लिया था लास्ट सीजन. आई नो ही वाज ओवर मतलब प्राइस था इसलिए हम शायद पे नहीं किए. बट ईदर वे इवन सिस्टम क्योंकि विथ आपको चाहिए एज अ प्लान बी. बार्सा का प्लान है यू गो विद द डायमंड राइट विद पेड्री प्लेइंग. उनका प्लान भी क्या अगर बाई चांस कल को खुदा ना खास्ता अगर बाल्डे को इंजरी हो जाती है मतलब डोंट टेल मी दैट यू आर गोइंग टू यू नो रिलाई ऑन अलोंसो नो राइट. तो आपको चाहिए था एक बंदा who has defensive work rate but is a pure attacking winger. I personally felt that. I think that was more of a need than a Felix. Or Abde, selling him is a mistake because Abde could do that. Abde is a winger who could have a lot of defense and attack. Or Fati also is more of a winger than a Cam really. ठीक है. तो वहां पर भी in my personal opinion मतलब मैं समझ में आता है मुझे if say Fati Abde का तो ठीक है he'll get game time in Real Betis ठीक है. But Fati Nathan how is Fati going to start over Mitoma or Enciso when Enciso becomes fit? Please tell me. Honestly, I think Brighton are just taking advantage of the market and just bolstering their team. If I would say they might play him up front. If they don't want to play what's the name, João Pedro or Danny Welbeck is injured. Danny Welbeck's not young, guys, and Danny Welbeck still plays, in my opinion, pretty well for how old he is. He but still Evan has that Ferguson savviness is there, about him. João Pedro, Evan Ferguson is there, Enciso. but I think it's just a matter of bolstering the squad. And because let's be honest, Brighton have the group of death in Europe. I was like, wow, it's going to be a rough couple of months for them because they are a really bad group. But yeah, I think probably that was part of the. I think they just envisaged a difficult European summer and a calendar. So I think they just said, you know what, he's there, he's available, let's go get it. And I think it's brilliant because what do they have to lose? Nothing. Yeah. So why not? It's brilliant. I would have taken João Felix on loan. I would have taken João Felix on loan. I mean, look what we have. Nothing. नहीं लेकिन the French member of the emergency services unit. Even on loan. No, I don't. I agree with Anshuman. Why? Because João Felix भाई वो थाली का बैंगन है bro. वो Exactly. देखो मतलब पैसे दो इग्नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेजेस कवर करो लोन की फीस दो. He's a good player. Don't get me wrong. The player is good. Mentality. I have a question. But makes no sense to me. ना तो वो प्रॉपर राइट विंगर है, ना तो वो प्रॉपर लेफ्ट विंगर है, ना तो वो प्रॉपर स्ट्राइकर है. पता नहीं इसको खिलाते का. अगर इतना ही होता तो भाई अगर we could have gone for those. So सूरज ब्रो भाई सूरज यहाँ पर देखो जोर जोर से चिल्ला के सबको स्कीम बता दे भाई. मीम टाइम कर देते भाई की मीम टाइम कर देते. लेकिन अगेन मतलब आप बोल सकते हो अबाउट फेलिक्स. देखिए मैं people might get it wrong. Barca fans, nothing against it. I know एक नया प्लेयर आ रहा है, आप excited हो, I get that. और बंदा अच्छा है, let's be real. Technically is good. एथलेटिको मैड्रिड में वो लग रहा था कि बेसिकली वो ये ना नई दुल्हन बेसिकली एक जकड़ के रखी है अपने सिमियोने ने, ऐसे लग रहा था. लेकिन चेल्सी में भी क्या उखाड़ा मतलब as much as I've liked him in Chelsea, I don't think he has uprooted trees is what I'm trying to say in terms of numbers is what you need especially as a substitute. So वहां पर इश्यू है. लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ what Lukaku has done with Chelsea and with multiple clubs, हम इतना hate देते Lukaku को. To be honest, Felix hasn't done anything different. Felix has openly said while he was an Atletico Madrid player, I want to go and play for Barca. Yeah, but I mean, Ankit, I mean, it's Atletico Madrid. You want to leave, I can understand, but I want to go and play for Barca. He's not even said I'm a Barca fan. I want to go and play for Barca. He's actually said that. Wouldn't you want to play for Barcelona if you played under Simeone? But you don't say it openly, man. That's the truth, right? But it's imagine the if you're an Atletico fan. I'm not, but I'm just saying. Agar wo hai I'm not either. I definitely don't like the manager. I find him unbearable. But yeah. चलो कोई नहीं देखते. Mentality issue है. Let's hope for Barca he doesn't मतलब again turn the tide. होता है ना then things are not going well ना. वो होता है. A lot of like being a Dutch fan as well, you would know that a lot of Dutch players are also infamous for that. कि भाई आप जब अच्छे हो तो बहुत ही अच्छे हो, लेकिन जब things go bad, man, you can go bad, really bad. And I think Dutch and even Belgian players are known for it. Lukaku being one which comes to mind. Messi is good. बोल रहे 41. ये क्या वो starter he can play as a center forward too. एक second. मैं वही बोल रहा हूँ Messi is good मेरे भाई. Big up to you यार. Much love.
That's what Center I think forward he'll do. option. That's एक what I second, think let he'll me do. answer this. Let me answer this Yeah. quickly. Center forward he can definitely play, but when you have an Evan Ferguson, when you have a João Pedro, when you have a क्या बोलते हो Welbeck, when you have an Enciso who can play second striker as well. With all due respect, I don't think Fati starts over them, and that's an honest opinion, having watched both Fati and them. Simple as that. Like inductions in See, the house. Fati Daksh, can bye. definitely What's up? give What's up? them Big up. Party can definitely give them that option, you know, like from the bench, you can say, जहाँ पे bench पे उनके options नहीं दिख रहे थे, you know, at this point of time for Brighton, because they are also in Europa, right? So they're playing Europa League हाँ as well. मतलब that's why they were So, going for Kudus maybe. because, you know, they need that depth. वो डिजर्वी को भी पता है, वो दिखा दिया, you know, वेस्ट हैम ने कि प्लान ए काम नहीं हुआ तो प्लान बी के नाम पे इनके पास कुछ था नहीं, you know, and they were absolutely like 80% possession and still losing 3-1. You know, they could have lost by a bigger margin, to be very honest, on that day. But that's what we have seen. Ki bhai, theek hai. You know, every season he has that one game, 1 or 2 games where he just, you know, totally loses it. मतलब उसको नहीं पता होता कि भाई पिच पे क्या चल रहा है फिर. You know, I think that was the game for him, and that's where he realized that okay, you know, it's better to get someone at least even as an option. अगर मिटोमा का ऑफ डे है तो फिर कौन है? You know, so at this point of time कुछ था भी नहीं. So मतलब quality options who has experience, especially Europe में खेलने का. I get you what you're saying. But Daksh क्या हाल है भाई? First of all, big up to Daksh यार, क्योंकि I know it's a tiring day. Daksh is like नहीं I'll still come in for some time, so I appreciate that यार. Daksh काफी दिन हो गए बात के वैसे भी. और अब तो भाई deadline day with Arsenal versus Manchester United. So madness happening everywhere. So by Daksh, generally, what is your report card saying? We'll start from your club. We have discussed a lot already about Manchester United, Arsenal, and Chelsea. Generally, अभी तक अभी बारसा के डिस्कस कर रहे थे. लेकिन taking your point of view for Arsenal is important क्योंकि अब I know मतलब you would say in terms of buyings, generally you would be satisfied, more than satisfied in terms of, and then you have to do on the pitch. बाकी तो यही है. लेकिन bad luck हो गया with Timber. अब I was seeing a video the other day, and I think तो लेफ्ट बैक सिचुएशन है, इट इज डेफिनेटली क्वेश्चनेबल इन टर्म्स ऑफ आर्टेटा का जो टैक्टिक है, जो अगर आपको अगर इन्वर्टेड फुल बैक खिलाना ही था तो व्हाई डिडंट यू गो बिग ऑन कैंसेलो? मेरा एक क्वेश्चन है सबसे पहले तो. हाँ, तो जितना आर्सेनल के जर्नलिस्ट का रिपोर्टाज था कि वी वेंट फॉर कैंसेलो, बट सिटी ने बहुत क्रेजी प्राइस कोट कर दिया हमें, समथिंग लाइक 47-57 मिलियन. तो लोन पे लेना था. नहीं, दे weren't selling us for loan, मतलब हम पे नहीं भेज रहे थे वो लोन पे. दैट वाज द इशू. सो वी ट्राइड फॉर, आई थिंक कैंसेलो ही होगा आर्टेटा की फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर लेफ्ट बैक. बट इसलिए देखो यार, हमने फर्स्ट 4 गेम्स ऑफ द सीजन इंक्लूडिंग द कम्युनिटी शील्ड ना, हमने 4 डिफरेंट लेफ्ट बैक्स खिलाए हैं. ठीक है, एक में टॉमी आंसू, एक में किवी, और एक में पता नहीं कौन, मतलब ऐसे ही चलते रहा. अभी जिनचेंको आ गया, तो अब नेक्स्ट गेम में एक और लेफ्ट बैक आ जाएगा हमारे पास. So there needs to be some stability. There needs to be some stability at left पैलेस back. गया ना ये बंदा होल्डिंग. हाँ, 4 मिलियन में पैलेस गया. 100% प्रॉफिट भाई अंकित भाई, 100%. 2 अच्छा मिलियन पैसा में मिला खरीदा यार, तो 4 मिलियन में बेच दिया. नहीं, I am as an Arsenal fan, ये ट्रांसफर स्टार्टेड ऑफ ऑन अ गुड नोट बिकॉज हमने 3 बड़ी साइनिंग्स कर ली थी, एंड 3 एरियाज थे जो हमें बिल्कुल एड्रेस करने थे. टिम्बर, चलो काय, आई वुड से इज अ प्योर आर्टेटा साइनिंग. अभी द ज्यूरी स्टिल आउट ऑन हिम. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स डेक्लन राइस, आई थिंक ये तो सबसे बड़ा साइनिंग अच्छा हो गया हमारा. उसके बाद बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया था. उसके बाद डेविड राया आया, एंड तब से उसके बाद से देयर हैज बीन नथिंग मोर सिंस देन. यार आई थिंक 5वीं साइनिंग भी हमने कई करी, मैं भूल ही गया किसको करा है, बट 4 to 5 साइनिंग्स वी हैव डन. लेकिन मेरा वही है ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वाला सिचुएशन. मैंने बात भी की थी, आई रिमेंबर व्हेन वी डिड द प्रीव्यू फॉर द एंटायर सीजन ना. देखो आई अंडरस्टैंड, अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर द चैंपियंस लीग ड्रॉ, आई मस्ट से कहीं ना कहीं एनवियस दैट यू कम आफ्टर 7 इयर्स एंड चैंपियंस गेट लीग यार, वो ड्रॉ. यूरोपा लीग ड्रॉ ही अंकित भाई. ये सारी टीम्स हमें यूरोपा लीग में, इफ दिस वाज अ ग्रुप व्हिच यू हैड बीन गिवन विदाउट कॉन्टेक्स्ट, यू वुड से दिस इज मोस्ट लाइकली अ यूरोपा लीग ड्रॉ. बट आई एम हैप्पी because this shows कि we can get into the next round यार. And if we top this group, I would say तो फिर तो क्वार्टर्स में भी जाने का अच्छा चांस है. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये हाँ, बट लीग का ड्रॉ आप कुछ कह रहे थे अबाउट प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वाला. प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी मुझे लग रहा है क्योंकि हम एक्चुअली ब्रीफली डिस्कस ही किए थे दैट यस आई अंडरस्टैंड कि हैवर्ट्स में जूरी इज आउट, लेकिन थॉमस पार्टे, डेक्लन राइस, आपका लोकोंगा तो आई थिंक ही इज गोइंग ऑन लोन इज व्हाट आई हियर. लास्ट लूटन टाउन इज इट, इफ आई रिमेंबर राइट, जो मैंने देखा था.
ठीक है, तो वो जा रहा है, ठीक है, एलिनेली इंजर्ड है, आई कैन अंडरस्टैंड, फिर भी आप जैसे खेल रहे हो राइट नाउ, जॉर्जिनियो इवन फॉर दिस गेम, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले गेम में, मतलब you would almost say that Trossard, Nketiah would demand, even a Vieira, मतलब going by the performances की है, they would demand a start. And I love personally, you guys know मैं कितना defend करता था Kai Havertz को, but I don't think I'll defend anymore right now. I don't think I need to defend anymore. ये लेकिन ये बोलता हूँ that Kai Havertz को अभी निकालना is kind of unfair on him as well as it's unfair on the others not picking them. तो ये एक इश्यू रहेगा, मतलब हाउ विल यू मे से दैट चैंपियंस लीग आ जाएगा तो रोटेट करेगा भाई, लेकिन चैंपियंस लीग में द सेम बेस्ट प्लेयर्स वांट टू प्ले देयर एंड दैट इज व्हाई दे साइन फॉर आर्सेनल, नहीं? मेक सेंस यार अंकित भाई, बताओ बट क्या है एक चीज, आई वुड से माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट दिस सीजन इट इज द बेस्ट टाइम टू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, सिंपली बिकॉज येलो कार्ड्स रेड कार्ड्स एमी फिले मिलते जा रहे हैं ना, यू नेवर नो व्हेन यू लूज अ प्लेयर, एंड इफ यू लूज अ प्लेयर इन अ की पोजीशन, तो जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू कि हमारे पास नाउ if you exclude Timber since he's injured for a long time, we have 6 defenders overall for 4 positions. Now, God forbid one of them gets injured and another gets a Farjipana Tomiyasu ki tarah red card. Right? You are down to 4 defenders in 4 positions. And if that turns out to be a week where you have to play twice a week, then you are starting your 4 defenders in 2 consecutive games without any rest, and फिर आपको वही होगा. So I think this is the best season to have a problem of. So sorry to cut you, लेकिन is Uh-huh. it not eventually you need, मतलब you don't change your defense anyway ना as much as possible, especially when you are rebuilding, like आपका एक नया प्रोजेक्ट वापस से आप कर रहे हो, और डिफेंस में क्लियरली लग रहा है मुझे, क्योंकि एक क्लियर चीज है दैट जिनचेंको, तो भाई अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट अवेलेबल एवरी डे ऑफ द सीजन. मैं वहीं पर आ रहा हूँ दैट अच्छा, बाय द वे क्विकली मैं अंशुमन को सी ऑफ करता हूँ यार, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट इन सेकंड. भाई पीपल द यूनाइटेड रोड को चेकआउट करिए, मैंने हर एक चैनल को टैग किया, काफी अपने भाई लोग आए, तो भाई सब लोग का चैनल्स इन द फर्स्ट लाइन डिस्क्रिप्शन है, टैग्ड यूनाइटेड रोड, अगेन अंशुमन ओपी हो जाए इन द चैट. भाई अंशुमन एंड रैंट्स वी लव इट, बट इट इज पेंडिंग, तो अंशुमन विल बी डिस्कसिंग वंस द ट्रांसफर विंडो इज टेक्निकली डन, लेकिन हम मिलते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर द गेम, लेकिन अंशुमन थैंक्स लॉट. श्योर. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. Good night. चलो गाइज, बट कमिंग बैक टू दक्ष, जो मैं बोल रहा था ना, नेथन, इवन यू ऐड इफ यू वांट टू, लाइक टियर्नी, लाइक the fact is अगर Zinchenko नहीं है, which is quite possible that when many weeks he's not there, because as much as he's a good player, he is known for being that. So getting rid of Tierney, I understand Tierney would have wanted more game time, but because he's one who's been at Arsenal, और आप especially जब Timber आपका injured है, and I believe it's a long term injury, right? तो मतलब would you not have preferred keeping Tierney around rather than playing Tomiyasu at left back? Just asking. हाँ, no, I personally would have preferred it, but then again मैं manager नहीं हूँ. देखो, for me, I don't think you should be इतना tactically rigid कि मेरे को तो invert करवाना है भाई, कुछ भी हो जाए invert ही करो. हाँ, exactly. राइट, आपको इतना तो होना चाहिए कि यार बंदे कम पड़ जाएंगे. एंड मेरे को इस ट्रांसफर विंडो का मैंने इसलिए कहा, स्टार्ट तो बड़ा अच्छा हुआ था, बट एंड में आते आते इट फील्स लाइक वी आर इन द सेम बोट एज लास्ट टाइम. अंकित भाई, वी आर शॉर्ट ऑन डिफेंस. इट इज लाइक हमने खुद ही सैबोटाज कर लिया. एज मच एज रॉब होल्डिंग चला गया है, अब आई एम थिंकिंग अगर हमारा राइट सेंटर बैक इंजर होता है, गॉड फॉरबिड, अगर सलीबा को कुछ हो गया या फिर वो सस्पेंड हो गया एक गेम के लिए क्योंकि लास्ट मैन टैकल करके उसने रेड कार्ड ले लिया, सस्पेंड हो गया, हु प्लेज एट राइट सेंटर बैक? चलो बेन वाइट प्लेस. लेफ्ट सेंटर बैक फाइनली गैब्रियल आया. विल यू पुट दीज गाइज थ्रू द रिंगर ओवरऑल? नहीं. इट्स अगेन इट्स अ लॉट. नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट अगेन मतलब रिसेंटली नहीं खेला है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द होल आइडिया अबाउट हैविंग पार्टे इन द स्क्वाड, आई थॉट डेक्लन राइस, जब एटलीस्ट व्हेन लैम्पार्ड वाज अराउंड, आई नो लैम्पार्ड को हम रेट नहीं करते आजकल एज अ मैनेजर, बट there was a very strong thing that he wanted Declan Rice because of his ability to drop back into the center half position in the back. And वही है, I think the reason we are tactically experimenting at least against जो so called smaller teams होती हैं, and especially at home, हम इसलिए कर रहे हैं because the last season सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही थी कि हमारे पास इतने बंदे नहीं थे स्पेसेस फिल आउट करने के लिए. जब टॉमियासु एंड सलीबा एक साथ इंजर हो गए थे, आपको रॉब होल्डिंग को बिल्कुल टाइटल रन इन में डालना पड़ा था, एंड उसके अलावा ऑप्शन क्या था कि आप याकूब किवियोर को टाइटल रन इन पे डालो, एंड दीज गाइज हार्डली एवर गॉट अ स्निफ ऑफ द गेम. सो राइट नाउ वी आर सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद दीज लाइनअप्स कि बाय चांस मान लो जिनचेंको को कुछ फिर से हो जाए, देन एटलीस्ट टॉमियासु एंड किवियोर ने लेफ्ट बैक पे खेला हुआ है, एटलीस्ट
इन अ लोअर स्टेक गेम, ताकि अगर आपको क्रूशल मोमेंट पे उनको डालना पड़े 1-2 हफ्ते के लिए, तो दे आर नॉट ड्रॉपिंग इनटू फेमिलियर है। दैट। हाँ, मतलब Got it. थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाए। इट्स नॉट यू आर ड्रॉपिंग देम एंड उनको वो होता है ना एक सॉर्ट ऑफ कोल्ड कॉलिंग टाइप्स, कि आपको बिल्कुल ऐसे ही बस बोल दिया अब जाओ करो जो मैं चाहता हूँ। तो लो स्टेक्स गेम एट होम, जो हम टू बी ऑनेस्ट फुलम के अगेंस्ट भी जीत जाते, अगर हम लास्ट कॉर्नर अच्छे से डिफेंड कर देते तो 9 out of 9 होता। तो एज मच एज एक्सपेरिमेंटेशन को गाली पड़ रही होती, एटलीस्ट दीज गाइज वुड हैव हैड some amount of practice playing in these positions. So Declan can also go into center back if need be. Declan can play at the 8. I think the issue, the solution is season यही है अंकित भाई, कि जो लास्ट सीजन था कि आप आंख बंद करके आर्सेनल का स्टार्टिंग लाइनअप एंड बेंच बता सकते थे बेस्ड ऑन द प्लेयर्स दे हैड अवेलेबल। वो नहीं करना है, बिकॉज हम में से टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता कि हम यूनाइटेड के अगेंस्ट क्या लाइनअप खिलाने वाले हैं। Will we मैं go उस to पर ही आने वाला था। हाँ I because think हाँ let's quickly start with Nathan. Nathan, what's your lineup for United? Wan-Bissaka, Dalo. Oh, really? I thought you were all Alvaro. You were like No, I Alvaro know को he's खिलाना not. है और I know that. he's not going to do it. But there's no point. There's no point Yeah, saying the realistic. name and then look Got like you're a fool. Martinez, Lindelof, Hmm. Eriksen, Casemiro, Bruno, Hmm. Anthony, Rashford, and Hoyland. I Is think Hoyland Hoyland fit enough to start? That's my question. available Yeah. तो खेल रहा है। We are Available. going to go straight to Valhalla tomorrow on Sunday. Let's go. My feeling is that he'll put Hoyland on the bench. My Even I feeling. feel that. और I think it'll be too गर्नाचो high शुरू करेगा stakes ना? a game and it'll be too much pressure. He should put Uh, Sancho at false nine. Sancho. If he has Yeah, to play, exactly. he has to play Rashford on the Rashford wing. at left If wing. Rashford doesn't stay on the wing, I'm telling you right now, we're losing. I'm not even like So I Sancho is even a think there's false a play. nine, almost like two false tens rather, is what I would That's say. actually how we played the first two preseason games of Correct. ours when all our players weren't fit and on international break and extended holidays. So. Arsenal के लिए दक्ष 11. It's all a guess to be honest. मैं ideal lineup बताता हूँ. If you are picking the team. Yeah, if I was picking the team, it would be Ramsdale. It would be, I would put Ben White back at right back instead of Partey. I think Partey versus Rashford at the wing is a very terrible matchup. And even if Rashford starts at center forward lineup में, Ten Hag can easily make an in-game adjustment उसको Partey के against 1v1 करने के लिए. So Ben White at right back. I'd put Saliba and Gabriel की pairing. It has to come back here. It was a most successful pairing. And left back पे Zinchenko. He is fit. If Zinchenko nahi, to then Tomiyasu. But most likely Zinchenko is fit and he will start. I'll put I'll put Partey at the base of the midfield and Declan at 8. I'll put Odegaard uske side pe. Saka, Martinelli and Jesus. We have to go with the strongest. I would love Kai here. But if Jesus is not fit, then the only place I can see Kai is center forward. But yeah, बताओ क्या है center forward पे हमारे पास यही है. Eddie is in good form, really really good form. But Is he having a niggle? There was rumors. no, he's fine. He's fine. Eddie is in good form, but बताओ Trossard could Jesus play there as well. could, but I think it's going to be between Eddie and Jesus. Jesus की सबसे बड़ी advantage होती है, the more Jesus, so Eddie Nketiah has a right-sided bias, so he'll gravitate towards his right, but हमारा left side weak हो जाता है. With Jesus, him, Zinchenko, whoever is the left-sided 8 and Martinelli, amazing combinations. तो Jesus का left-sided bias ज़्यादा होता है. I would rather see Martinelli in this game. अगर United का left back जो है, जो भी होगा, Dallo हो, most likely it will be Dallo. Dallo ही है. If Saka gets some joy on him or against him, then fair enough here. But yeah, I think मेरे को बस यही देखना है कि whether they play Sancho or Martial or Hoyland, because the only thing is I think United के पास wild cards बड़े हैं. Wild cards in the sense these guys can perform in any game. Like you can laugh at Anthony all you want, but if he's at the edge of the box and he gets a ball from Bruno, वो curl कर सकता है. ठीक है, and वही होता है कि he can curl it. Same thing with Anthony Martial. You can laugh at him, you can call him ambulance man, whatever you want, but sometimes his hold up play, his dribbling and everything is absolutely amazing, and him and Rashford can combine really well.
So I want to see what their lineup is, but मेरे हिसाब से if we put out a strongest lineup, we can get a decent result. It'll be goals. We can't keep a clean sheet at the Emirates for some reason. 23 games में हमने सिर्फ 4 clean sheets Especially रखी हैं. first few minutes, na, is what I hear that you've been conceding like crazy. Especially against small teams, Ankit bhai, against Southampton, Bournemouth and Fulham, first minute. But Which when is it comes, such a non-Arsenal thing to do actually. yeah, but this is now a legitimate tactic ना. जैसे कहते नहीं है कि लिवरपूल में ट्रेंट को टारगेट करते हैं because ट्रेंट कभी कभी डिफेंसिवली सो जाता है. It's the same thing. It is a legit tactic by teams now to attack Arsenal in the first minute and chase and pounce at everything because we can make a mistake. But the only good thing is of two things. Two अच्छी बातें ये हैं कि हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हमेशा टर्न अप कर जाते हैं होम पे, चाहे लिवरपूल हो, चाहे चेल्सी हो, चाहे यूनाइटेड हो. सिटी इज द ओनली आउटलायर बिकॉज आई थिंक दैट इज सिटी. द सेकंड थिंग इज यूनाइटेड का टॉप 9 के साथ जो अभी तक अवे फॉर्म है लास्ट सीजन से बहुत बुरा चल रहा है. सो आई एम होपिंग वी कैन कीप ऑन एडिंग टू दैट यार. Yeah, so if history को थोड़ा सा लेते हुए it is in our favor, but you can't have these. Like I said, United has too many wild cards. Havertz hat trick तो भाई, if that happens, मूर्तियां लगने वाली हैं भाई एमिरेट्स के बाद. बाप रे भाई, इतना भी होप नहीं था मुझे आज जब मैं बैक कर रहा था हैवर्ट्स के लिए, लेकिन ठीक है. मतलब देयर वाज अ गेम अगेंस्ट फुलहम, आई रिमेंबर 2 years ago. I think he'll have a role to play this game. Wow, I think what a he game will. he played. There were some games where he like against Real Madrid, मुझे याद आता है, there were some games he played really well. Problem वही है, sometimes he's like totally off. I think he It's needs about confidence. आपको पता है अंकित भाई, लास्ट गेम में ना फुलहम के अगेंस्ट भी the guy was marginally offside. He played a beautiful ball to Odegaard and Odegaard ने गोल भी मार दिया था. If he had gotten one assist, one goal, एक बस उसको, he just needs that one thing to click on. The only thing I'm very disappointed in is that rivals will anyways tease Havertz. उनका तो मतलब, of course, rivals will tease any player. We will tease Anthony Martial, Rashford, वो जो भी करते हैं हम भी करेंगे. United fans, Chelsea fans, whoever want, मतलब काय का हमको तो बहाना मिल गया ना अब तो. हाँ, but Arsenal Chelsea thing plus the fact that Kai Havertz for 70 million, तो हमें तो भाई बहाना what मिल makes गया. me sad is that Arsenal fans are also joining in. If everyone is piling on him, who will? I mean, I have never in the history of sports ever seen कि कोई किसी प्लेयर को गाली दे के and suddenly प्लेयर बोलता है अरे गाली पड़ी चलो अच्छा खेलते हैं. और 2 मैच के बाद में आई वाज सीइंग अगेन, मतलब आई डोंट वांट टू नेम चैनल्स, लेकिन भाई 2 मैच के बाद में ऐसी गाली, मतलब यू गाइस आर सीरियस. मतलब आई नो दैट कहीं ना कहीं यू नॉट टोटली रॉन्ग, बट कम ऑन, इतना तुम देखते ही है. नहीं, I think it's a little over the top. इतना नहीं होना But चाहिए. don't you think? I see what you're saying. Listen. I said I'll say deductions phase because if you can say anything, you should say it to someone's face. So I do Arsenal watch alongs where, or of course Daksh does as well. I said I think Chelsea have had the steal of the transfer window. I've said it. And here's the thing. Yeah. I don't think it's a lie, yaar. It's 70 not even million, even banter, if you're a okay? good I'm player, just it's a great Yeah, price. no, I'm just looking. No, but even we got fleeced by Mount. Listen, I'm not just going to throw Havertz under the bus because it's the fashionable thing to do. I told you I don't think he's worth that money either. On your channel, like when you asked me, I told you that as well. I think I understand where people are coming from because it's cumulative. I would like to think they're not coming to that conclusion based on 2 games. Now, if he keeps doing it, someone's going to have to say, oh, everybody's right about him. Because you can't just go, yeah, we'll give him a whole another season, because then it gets out of hand. How many more games are you going to give him? 10 more games? Let's give him till January, but then what? Like it has to stop somewhere. At some level, देखो यार, I think at some level. Listen, Xhaka got so much shit. Listen, I really respect Xhaka. I don't agree with what he said to the Arsenal fans when they wanted him gone. You should never ever do that. He was the captain. Listen, as someone who enjoys Arsenal's chaos, that was wrong. You can't do that shit to fans. I'm sorry. Doesn't matter which club you play for. You can't do that. But even he redeemed himself. Yeah. If Kai Havertz can't redeem himself, in how many more games are you going to give him? I wish it was that straightforward, na Nathan. See, he's playing the Xhaka position, but he's a very different. Yeah, wrong position as well. Yeah, absolutely. For sure. He hasn't played that for a very good while. Very long time. He's playing the Xhaka position, but he's not a defensive player like Xhaka, जो Xhaka drop deep करके build up में help करता. He is one of those guys कि आप switch करके he's going to be the one who finishes the move. Now, he's not played with the guy who gives the pre-assist. That's what I would say. Yeah, या जितना हमारा सिस्टम है, जो मेरे को लगता है अंकित भाई, कि लास्ट सीजन जो हमने जाका को जब खिलाया था, क्योंकि जाका के भी काफी गोल्स आए थे, बट द थिंग विद जाका वाज दैट
sometimes when we play him the ball over the top or through ball, he was too slow to actually catch up to it. Kai is not that player. Kai is fast enough to catch up to it, but he's not that good at build up also. A legitimate criticism for Kai Havertz is that Fabio Vieira ने आधे से कम टाइम पे आके he had a more of an impact than Kai Havertz in that game. And I say this on every stream, he did not do some Ankara Messi moves. He just ran. He was more proactive, and he just looked a lot more authoritative with the ball. Kai looked, I would not even say disinterested, but he would look like he's making the wrong decisions over and over. Either he was chasing, either he was hurrying up, or he just made the wrong decisions. Simple. So Kai ko, I don't know if it's pressure or if it's what, but he just needs to do the basic things right. I don't expect him to run up and down the wing. That's ये not कैसे है ना, मतलब दक्ष मबलू अपने जब स्कूल टीम सिलेक्शन होते थे ना, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नॉट ऑल स्कूल्स सिलेक्शंस आर परफेक्ट, और हमारे सारे इतने एक क्लास में 70-80 बच्चे थे, ठीक है. व्हेन यू टू हैव से क्रिकेट और फुटबॉल ना, एक बॉल किक किया, एक सेकंड में क्या बस you have to do. So people used to give their utmost. तो वहां पर you over try, you know, आप over zealous हो जाते हो, and that is what probably Kai Havertz is. कहीं ना कहीं to get over that confidence, he needs to basically, you know, do a little bit more, but a little bit calm. Arsenal fans need to be as well as him. But anyway, Yeah, that's I think it's a thing which is... the fact that he's from Chelsea, the fact is that the Yeah. price tag weighs heavy. I think it has always been stacked up against him. Statistically, he has been statistically only, not eye test, not on the field, not game state. Statistically, he's been one of our best. Most off ball movements, most distance covered, most aerial duels won, most tackles won. But that is not what you pay 65 million for. That is what you pay maybe 35 million for. कि अगर आपको डूल्स जीतने वाला बंदा चाहिए, तो ये प्राइस ना तब तक चलता रहेगा अंकित भाई, जब तक ये ना until he returns with a 10 to 15 goals assist per एक सीजन में, ये 65 million तब तक चलेगा. I think hopefully because he's young and eventually I don't know any player जो regularly आर्टेटा के अंडर खेल के परफॉर्म नहीं करा है, because जितने लोग regularly खेलते हैं at least they eventually turn out really good under Arteta. So I'm hoping it's the same for Kai, because Arteta ने अपनी काफी reputation and काफी पैसे stake करे हैं इस player पे. So this is a signing that could actually make or break the season, because for 65 million, considering the market, you could have gotten some really, really good players in some really, really important positions. So it's a gamble by Arteta. Now it's up to him to make I mean, sure just that look, he achieves our I don't know, were objectives. you here? Sorry to cut you off. I don't know if you were in the chat at the moment, but someone posted Ibrahima Sangare is at Nottingham right now undergoing medicals. Yeah. Man, that would have been such a good signing for you guys. Like we were even looking for him before Ten Hag came I in. think United और लिवरपूल में would have fit been होता good. ज़्यादा, if I'm being honest. Yeah, we were looking for him initially, but then we got Casemiro as a panic. Even so, like, we anyway, remember last season हमने जब लिया था Zakaria को on Damn good loan, we were sign. looking at Nottingham Sangare as Forest well. are killing it. Yeah, Nottingham Forest are killing it. Whatever you think of their play They style sold and whether Brennan they Johnson, survive or no? not. Tavares has gone there, right? Nuno Tavares. Tavares has gone there. Matt Nuno Turner has Tavares gone there. आपका Hudson-Odoi आपका या ये बंदा सांगारे है, और Matt but on the other Turner hand they've गया है. lost Brennan Johnson, right? I think कहीं ना कहीं in terms of goals, I think they're still 40 trying. million, Anthony Elanga is Spurs. there. Yeah, he's looking good. Yeah, I saw both Nottingham Forest games. I think we are That's playing what we Nottingham Forest, wanted right? him So to I'm do. expecting That's what we wanted him to them to do do well. at United. He came on the left. We used to force him on the right because of Rashford. He comes in, whips across, gets an assist. I think I was like, अगर I हम was काय mad. का, sorry, I was just saying, No, अगर हम sorry, I'm done. काय का अगर हम 2/3 पैसा, around 40 million, if we had spent on Kudus, even if we'd spent 50 on Kudus, it would have been less toxic. Kudus would have been somebody the fans could have gotten behind. ठीक है, नया लीग है and everything, थोड़ी patience रहती. यहाँ पे people are saying 65 million दिए हैं, अब तो जादू करके दिखा, क्योंकि नहीं हो रहा. but Daksh, Yeah. I would like to ask you just counter, क्योंकि मेरा एक reasoning है, but a lot of big clubs could have gone for Kudus. There must be something that why they've not gone for Kudus. What is your Sell-on opinion? clause. Release clause and sell-on clause. Sell-on There clause is- कितना होगा भाई? 10%, 15%? So that is why Ajax agreed with West Ham, and there's a release clause in his contract. That is why Kudus agreed with West Ham. और थोड़ा injury prone भी है, is what I hear, compared to a lot of other options in that position, plus being I don't know, मतलब
शॉर्ट टर्म में सोच सकते हैं he might go for the African Cup of Nations. I think these are the only two three things आप बोल सकते हो. But is it reason enough for big clubs to say no? Because मेरे ख्याल से I agree with you that Kudus is someone who brings that European pedigree. He's someone who's played in international football at that level. भाई वर्ल्ड कप खेला और काफी अच्छा खेला था. और even Champions League last season we saw, even Europa League we have seen him. I think it's a no-brainer. West Ham have done some great business. I would ask the chat as well. Bhai, Nathan, which club generally, and it includes Europe as well, which club has done the best business this particular window? I mean, listen, you can rate their players or not rate their players, but Barcelona, for what they're paid, value for money ke hisab se it's highway robbery, yeah. Like it's highway robbery. It's Gundogan for free, bro. In the most positive way, I can say it's just simply genius. I mean, like if they win the league title, even after Real Madrid by Bellingham, and I know people make jokes about Joselu, but he got the assist that day out of a tight victory. Just on the players they bought, if you see, even Bellingham and Joselu are probably better than some of those players that they got in. If those players is all it takes for them to win another league title, it's a steal. Best transfer window in the world, probably. A lot of people are saying Bayern, Forest. Nottingham Forest. Nottingham Forest. That's what is your opinion, yeah? The best transfer window, I would say top 3 mein आएंगी. I would say number 1 is City. I think again they have sold so well they have sold their players. And value for money, definitely. Lekin Matheus Nunes, haven't they overpaid 62 million euros? Definitely. I mean, again, I think it's just Jorge Mendes. That is the market. They needed somebody in the midfield. But uske alawa bhi dekho na. Do you think Trafford was worth 20 something million? Don't think so. Cole Palmer, who has, I don't know kitne league goals hain. He's gone for 45. He has a couple of goals, and that too in about 20 appearances, I think, in all competitions. Last 25 appearances in all competitions. Again, it's a gamble, but he's also gone for 45, right? Definitely, it's a great business. Triple the amount of what his market value was. McCarthy को लोन पे भेज दिया है, लोन फीस के साथ, और बच्चों को भेज रहे हैं. उससे पहले बजूनों को they've sold. So selling wise, City have been absolutely top notch. Buying wise भी also. They've gotten Kovacic. They've gotten Guardiola. And Guardiola moves like banda is floating. He does not move like a center back. It is like जो basketball में कहते थे, Shaq does not move like a center. That is what Guardiola is. He does not move like a center back. He's too quick, too agile. So City हमारे number पास सस्ता Guardiola ना, Colville. good business, keeping a hang of him, by the way. But Maatsen का I don't know Maatsen का क्या होगा. But मैंने तो पहले ही प्रीव्यू में भी बोला था कि Maatsen, Chalobah and Gallagher are the next on the block. इन तीनों में से तो कोई जाएंगे. Because those are your most sellable assets. And FFP में pure profit register होगा वो. So a lot of people are saying Chelsea का देखो on paper तो brilliant लग रहा है. Short term में मैं नहीं कह सकता. Exactly, it'll take a time. It'll take a long time for them to it's a transfer window. ये जो last की 2-3 transfer windows हैं, it is one of those transfer windows that will define Chelsea for the next 6-7 years. In a positive, negative, that is yet to be seen. Because if this gamble pays off, then yeah, brilliant business from Todd Bowley. Wah, business mind, American capitalism, zindabad. But also sold 36,000. But also, if this does not work out in some way, then it's मतलब फिर तो दलदल वाला सीन हो जाएगा. तो फर्स्ट सिटी आई वुड से. सेकंड आई वुड बी अ वेरी थोड़ा अनकॉमन. थोड़ा अनकॉमन भी नहीं है. शुडंट बी दैट कंट्रोवर्शियल. But not just their business this time, but only because of one player. I think Jude Bellingham is a transformational signing for any team. For not right now, for the next 7-8 years. This is like आपने एक बहुत अच्छा मिडफील्डर वापस पकड़ लिया और आप उसके प्राइम से भी प्री प्राइम ईयर्स भी पकड़ रहे हो उसके. And Jude at Madrid, I mean, it's absolutely crazy. But by the sheer quality and value for money, I would say very close third would be Barcelona. I think उन्होंने बहुत अच्छा करा. So for me, it's City, Madrid, just because उनका midfield देखो अंकित भाई, it's full of young kids who are already winners. भाई मैं तो बोल रहा हूँ ब्राहिम डियाज बेचारे के लिए I feel sorry man, as in again for watching the Milan game side by side. And guys, yes, I am watching the Milan game side by side, not reacting. लेकिन भाई the fact being that I think बहुत लोग बोल रहे हैं West Ham, Brighton, by the way, always they मतलब talk about money man, the amount of money that Brighton make in second division. लेकिन I think let's be real, we were talking as much as Brighton and Europa League, I was talking about the
traditional bigish clubs. You know, I don't know whether I framed it right, लेकिन मैं वही अरे बता रहा था. sorry to ठीक है. interrupt. Juan Mata is going to whistle Kobe. Wow, अरे what an बाप out of रे. the blue transfer. But really, man, Manchester United have really screwed it up, man, for him. Well, I loved the guy to bits, man. Loved the guy to bits. मतलब कहीं ना कहीं, you know, he's also to blame. But the funniest part was, भाई वो Chelsea में Jose Mourinho did not give him a chance, and then he goes there and finally. मतलब मैं क्या Exactly. बोलूं I was just going to say that only. I was like, वो दो तीन he got Jose real bad Mourinho, luck. भाई you can see behind me. I'm a like भक्त हूँ उसका, भक्त, अरे proper भक्त. Spurs का move for Lloyd Kelly and Conor Gallagher has collapsed, चलो. and Conor PLM and Gallagher. Højbjerg is also not moving out. But I think it'll be a problem of plenty for Poch as well. लेकिन just finishing that point, Jose Mourinho देखो 2 aspects में बोलता हूँ, 3 aspects बोलते हैं. चलो साला का तो I would not say so much, क्योंकि साला का भाई we all knew it was coming, because उस समय हमारे पास शर्ले था, ऑस्कर था, विलियन था, lot of people he had. But in terms of De Bruyne, I think ego आ गया था. It was a very simple thing between 2 matches. Just because he said कि भाई stats दिखाया, ये अगदी नहीं किया, and he moved on, right? That was a big issue. And of course Juan Mata, I think he's just spoiled his career in my opinion, but ठीक है, things happen. But quickly again, if I'm seeing okay, by Conor Gallagher, what do you think, Nathan, being an England fan as well? Conor Gallagher, from Oh, his don't do that to me. perspective, yeah, I, you know, it's so strange. You said that. I'm looking at the England men's senior team and I want to drive my head into the wall. That clown has made it into the squad again. Harry I don't know how Maguire, is that Calvin possible. Phillips. Calvin which clown are Phillips, we referring to? clown. Can we be Harry Maguire, specific? clown. There are multiple of Jordan them. Henderson, clown. The coach is a clown. They're all clowns. All of them. The whole lot of them are clowns. I'm like, I don't think Nathan heard me, by the way, being in England. I'm like, in England, there are a lot of clowns. Which clown am I talking about? But yeah, I get you. देखो यार, मतलब बहुत लोग ये भी बोलते हैं, why doesn't he pick Tomori, for instance? देखो, Dude, I've been I'm saying not that from the defend last Southgate. Euros, I have Ankit. no one to defend. From the last But Euros. guys, listen. If Henderson and Maguire haven't done badly for England, what is the point of Southgate to drop them? Please tell me. Henderson has not played. Phillips has not played. What do you mean? I don't care, bro. What do you mean? मैं तो भाई इंग्लैंड James देखता था Ward-Prowse is not खाली even on अपने the list. चेल्सी के प्लेयर्स देखना, और I was a Beckham fan as well, for people who don't James know. Ward-Prowse is not even on the list. 2 players haven't played football on the list. What do you mean, Ankit? I know you're winding me up. I'm not going to answer. I love doing You're that. winding me up. क्योंकि भाई it's 12:30 bro. और क्या ही करेंगे हम लोग. लेकिन ग्रेट स्टफ गाइस. भाई हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस ही कर लिया. आई नो देयर इज अ मैच गोइंग ऑन. मैं सेकंड हाफ थोड़ा शांति से देख भी लूंगा. बट आई थिंक कमिंग टू द वीकेंड, अगर मैं क्विकली बोलूं, चेल्सी वर्सेस फॉरेस्ट, आई थिंक चिराग has already given his views about the starting lineup. I more or less agree. I think Manchester United have faced Forest recently, not that Arsenal haven't, right? If I'm not wrong, Arsenal have they played Forest already? Yeah, पहला गेम था ना, first game of the season. Brennan Johnson missed that sitter and now he's going to Spurs after missing sitters for Spurs. पता नहीं क्यों नहीं, but कोई नहीं. But I think Chelsea के लिए इस बार I think the team picks itself. I believe अभी भी करीबन 10 लोग बाहर है, so I don't think there'll be a huge question mark. Chilwell, as much as he does not, favor that position himself, I think he'll be there because he's a captain for the time being, left wing. और आपका Colwill left back खेलेगा, as much as I would love Chilwell to be there. और कुकुरेया भाई रहेगा, अटक गया. तो I think center back situation, I think we'll have Thiago Silva coming back. Chelsea fans are not convinced with Disasi again. कोई Chelsea fan देख रहा तो भाई थोड़ा सा रिलैक्स करिए. Disasi is never a person who was known for his pace. ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही ज्यादा स्लो है, but when he gets that understanding, he will read the game better. Movement will be better, and I think it'll be already. मैं बोल रहा हूँ, in the final third, I can see a connect happening between Disasi, Enzo. पहले पास आता है, then Enzo to Sterling to Nicholas Jackson, who obviously start यहाँ पर. तो Gusto starts. I think the team picks itself, and I think Forest, we better be careful. I think एक तो मैं पहले लिख कर बता देता हूँ, we are conceding in a cross or a corner. वो पता है हमें. I think you'll concede in a या तो आप कॉर्नर सेट पीस करोगे या फिर you'll take a counter attack, because वो Awonoi वाला बंदा है ना. The guy scores, man. 9 goals, 7 matches. The first Nottingham Forest player to score in 7 separate games in the top flight.
There are subplots though. Serge Aurier, Spurs player playing against us, scoring against us last time. Of course, plays He's Ola looking Aina good, being yeah. next Chelsea Serge man. Aurier is looking good this season. He's Yeah, actually again, looking good. Anthony Elanga भाई, Anthony Elanga, Elanga. yeah, Elanga is there. So I think there's a lot of subplots यहाँ पर, तो अच्छा गेम रहेगा देखने के लिए. We लेकिन shouldn't भाई have इंडिया sold him. पाकिस्तान We shouldn't मैच have अगर sold हुआ him. Genuinely, we shouldn't have sold him. Not this season, तो at least. पीपल इन द चैट इंडिया पाकिस्तान और चेल्सी फॉरेस्ट कौन सा चाहिए भाई? कल बता देना यार चैट में थोड़ा सा, या दोनों ही कर लेंगे. ऑलमाइटी स्पोर्ट्स में ये कर सकते हैं साथ में, पता नहीं अगर बारिश नहीं आया तो वहां तो वो Do you बता have देना. StreamYard का premium? You can do it in 2 destinations, I think. एक ही हाँ, stream. आई डू इट ऑलरेडी ट्विटर में भी चल रहा है, लेकिन अच्छा. सोर्स थोड़ी चेंज कर सकते हैं. मतलब बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है कि जब आप सेटिंग्स पे जाते हो ना, कॉमन. there is this option called या आई think थिंक यू कैन. guests करके, guests can stream to their own destination या करके आई होता नो है. दैट एग्जैक्टली. आई डिड चेक इट आउट, बट लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया, बस करते हैं बस. But it'll be good fun. But brilliant stuff, guys. I think we have discussed. I think बाकी matches I know मुझे Roma एक चीज Milan आपसे already चल पूछते रहा हैं है. अंकित भाई, एक चीज हाँ, आपसे प्लीज पूछते हैं. प्लीज. Ian Maatsen, what is happening? Are you happy about मैं him ऑलरेडी going? ट्विटर पे रैंट कर दियो अपना, मैं बोल दियो मेरा ये सिंपल फैक्ट है. देखो, चेल्सी का जो एकेडमी है, इट इज ओनली फॉर बिजनेस. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, ठीक है. बट एट द सेम टाइम कंसिडरिंग जो हमारा कॉन्टेक्स्ट जरूरी होता है, लास्ट सीजन no one played for the badge. Let's be real. Hardly 2, 3, 4 players at max played for the badge out of what 25,000. ठीक है. तो उसमें से if you are having Ian Maatsen who has the guts, and ये झूठ नहीं है, there's no smoke without fire. If he has the guts and he has the क्या बोलते हैं, एक audacity to say no to Burnley when he has been one of the players of the season for them last season to Vincent Kompany, means this guy wants to play for Chelsea. जैसे कॉनर गैलेगर भी बोलते आ रहा है, there was a lot of interest for Conor Gallagher as much as there's a lot of criticism. The guy does a job But he rejected. as a third midfielder in a midfield 3. तो वो एक है, he said no to I think Newcastle in the window already. Chelsea has said no. Obviously price matters. तो मैं तो बोलता हूँ, अगर मुझसे पूछो तो भाई, being a Dutch fan as well, Ian Maatsen, I've been waiting for a Dutch player coming back to Chelsea and doing it well. I don't think लेकिन he's getting much game time, especially जब इंकुंकू और कार्नी आ जाएंगे. अभी खेले, he's playing like a left winger or a cam at times. जो he should start over Chilwell, as much as I love Chilwell. ठीक है, Chilwell is more like a left back or left wing back, not a left midfield or a left attacking midfield. But the reality is I cannot see him starting many games. और करेगा अभी तो कार्नी is going to come in 2 months. हाँ, maybe what I would say is यार, अभी 31 million है. Burnley शायद they might be interested again in January. We can take the chance and wait till January, क्योंकि January तक फिर भी he'll get here and there appearance, but starts नहीं मिलेंगे. That's the difference. But ये Kukurea is the blame. We need to blame Manchester United, Chelsea and Kukurea. Bro, come on. I was happy to take Kukurea. I don't want that Paella looking donkey that you signed already. I don't want that guy. Spurs player ले लिया तुम लोगों ने, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो गई. No, I want Alvaro. I'm willing to play Imagine if a Reguilon child starts. instead of Reguilon. I'm willing to Imagine play a Reguilon child starts instead of against Reguilon. Arsenal. मजे आ जाएंगे. Yeah, no. Okay, attacking wise, I think it's not too bad. Defensive is the main issue with the Last question to both of you. Champions League Group F. Who are the 2 teams that are qualifying? The one that you see behind me, किस side है क्या? AC Milan was playing currently. I think Newcastle will probably miss out, is what I'm guessing. PSG, for all the troll, they'll definitely top the group. Come on, इतना अच्छा window गया है. Luis Enrique, I don't see them bottling. I don't. Nathan, whom do you have? I'm going to go with. Give me a second. PSG, Dortmund. I think they have been underwhelming. They haven't. Yeah. It's going to be Newcastle and AC Milan. Fuck PSG. Rifat, you heard it there, bro. Being a PSG fan, लेकिन congratulations, भाई Rifat, हम आपको shout out. No offense, dude. No offense, but it's. I'm not a big fan of the people in the club. They've signed like some umpteen forward again, bro. I don't know why, but ठीक है. Luis Enrique, that is the only club जिस पे FFP नहीं लगता है यार. I have no idea. नहीं, I feel it's a clear indication Mbappe जा रहा है यार next year. Finally, they should be under FFP. They should already be under FFP sanctions. They are not. Ugarte के लिए इतना salary दे रहे हैं. Colomwani, Bradley Barcola. You gotta respect it. They're almost like John Gotti. They're like Teflon Dons. Owners, they can't be. You can't stick them with anything. They just keep buying every year. You gotta respect it, man. You gotta respect. It's weird. You don't like it, but you have to respect it. Like again, the story of the day has to go to Palinia, yaar. Matlab, the way that collapsed
It Poor has to guy, get man. to that. Poor guy. अभी भी हो सकता है. He might go to Premier League club. हम वही I discuss mean, करते थे 3 years के respectfully, बाद. I think Fulham is a lovely place to play football. Shout out to the Cottagers. It's a lovely ground, old school England. Marco हाँ, Silva, Come yeah. on, yeah. It's No, not that bad. Munich तो एਵੇਂ ही है. It's a dump, of course. नहीं यार. He should have. If he had gone to Bayern, I think they would have been. I would have edged them over as favorites for the Champions League over City. Because I think Bayern has had a very underrated transformation under Tuchel. If I will honestly say, if you are a fan of football and you have some free time, watch the Bundesliga and watch Bayern Munich play. They play very eye-pleasing football, but very effective football. And I think Sane, जो player बन चुका है, you guys will love watching Sane now. He plays really, really well. So, and Harry Kane, of course. Harry Kane, though. Now We've I can got enough finally Harry enjoy Kane. Harry Kane. Now I We got enough Harry Kane personally for me. Harry at Kane's least. coming to Old Trafford, Nathan. Harry Kane's coming Well, to Old listen, Trafford. Listen, you know what? Everyone thinks we have some kind of manageable group. So let's see. Let's see. I think, Palina deserves a good in job. fairness, I think Group B is actually very competitive. I feel like nobody is actually saying anything about it, but I don't think it's going to be a walk in the park like people think it is. For Arsenal? I really don't. Yeah. I mean, I'm not saying Arsenal is not going I to go won't through, say it's a but I tough don't group. think I'd it's say Bhai, it's a easy. tricky group. Sevilla Group is is easy. really downgraded, man, as a team. No, but I what know I'm they trying to say always is do. the group as a whole. I don't think it's actually as easy as people are making. I'm not. Yeah. I am saying Arsenal is going through, but I don't think that group's as easy as people are. Yeah. People are just going Manchester City as the easy group. Well, I mean, Feyenoord's group's easy too. It's just that all the teams are crap in it. For me, it's a tricky group. It's not necessarily a It is tough a group. tricky You don't have to be perfect, but you just have to be good enough to beat them. But the only advantage in that group is, for me, Nathan, is कि ना other teams can take points off each other also. PSV can beat Sevilla can beat PSV. Both of them can beat, who's the fourth team? Lons. Yeah, so yeah, all of them can beat each other. So you don't even have to get like 9 points, 10 points to be top of the group. You could somehow even manage it with like 9 or 8 also, because other teams will I devour agree. each I other. think we are both in the same boat. I think if we split results with, in your case, Sevilla, and our case, Bayern Munich, I think we both go through. Which is the most surprising transfer, bro, in this transfer window. मतलब यार ये कैसे चलेगा वहां पर? ये तो और बेटर क्लब जा सकता था. या ये मैं एक डाल रहा हूँ. मैं मेरे तरफ से ये है Zapata to Torino, bro. मतलब with all due respect to Torino, I think Zapata, थोड़ा बहुत hit and miss है बंदा. लेकिन I think Inter Milan, Roma were going for him, and all of a sudden going to Torino, I'm like, okay, really? I thought that he could do better, with all due respect. Again, Marco Verratti, Salah, man, अभी भी यार, it can still happen. Rumors अभी भी आ रहे हैं, लेकिन होगा नहीं. मुझे नहीं लगता होने वाला है यार. Come on, knowing I don't think 175 वाला आने वाला है. I think Marco Verratti again could be a surprise if he moves. लेकिन PSG, they need to manage FFP जैसे हम बोल रहे हैं. I think Bernat जा रहा है to Benfica, I believe. They are trying to balance the books, I believe. So हो सकता है Verratti also moves. Maybe Sangare to Forest, most surprising. I think for me that is surprising for sure. I would say Cole Palmer to Chelsea, and not because he could go to a better club or anything. I just didn't expect it. Simple as that. That way is surprise. Yeah, they kept it secret for once, at least under Burley कभी हुआ नहीं है. तो I agree too. I mean, listen, man. I call him Trophy Mourinho. I have extreme respect for Jose Mourinho, as long as he's not Chelsea manager. And let me tell you this. He got rid of the one person I didn't want to see ever play a game in England anymore. So God bless that man. He's great. Trampoline toes. Try not to piss off any more Italian people. And please retire in Italy. Thank you very much. चलो गाइज, गुड स्टफ. काफी हमने बात कर लिया. अगेन हम लोग आज भी होना है, जस्ट लाइक टुडे ट्वाइस. टुमारो अगेन वी आर लाइव ट्वाइस ऑन बोथ द चैनल्स, ऑलवेज फॉर ऑल टू सी. लेकिन भाई, all of you watching, एक like button दबा दीजिए. Certainly helps the algo, but more importantly, if you can give a follow to all my panel here. Brilliant stuff आप देखते ही हो. Everyone's working hard, so every support helps. Certainly, that is basically A for Arsenal, the United Road, Sports and Nathan, I think Football Medico, Playmaker India. भाई 500 channels शायद मैंने टैग किए. Yes, 500 किए मैंने. First line of description. So give them a follow, and more importantly, hit that bell icon. Can I ask you guys a question before you sign out? I Yes, always please, like please. doing this, if you don't mind. Upset of the week in the Premier League. Any contenders? Any personal contenders you think?
एक बार मुझे देखने दो फिक्चर्स Burnley Spurs. वो अपसेट नहीं है I don't think so. No, I don't think. But no, एक no. सेकंड, मैंने रिजल्ट नहीं बोला दक्ष, मैंने बोला है कि Spurs जीत रहा है। ये आपने सही पकड़ा Oh, no. नहीं, लेकिन I think guys, upset of the weekend, I'll probably say I hope it's not Chelsea Forest, for all we know. But Brighton Newcastle, will it be an upset? I think it'll be a good match. लेकिन Newcastle dropping a lot of points initially in the season is a big question mark. Huh? Pressure will be on as much as they've I not mean, they played did that badly. last season, even, right? They had so many draws. They should have been on top of the table for at लेकिन इस least साल the तो first they're half of the losing, season. already. Yeah. For me, there are 2-3 results that can be an upset. I think if Luton manage to get some points out of West Ham ka fixture, it's big for them. I think it started right already. Yeah, It's yeah, 0-0, 25 minutes. I'm looking forward to watching the Okay, game. I was watching Roma Milan, so yeah, thanks man. And I also think Liverpool versus Villa. I think if Villa क्या pull off timing है यार, something. Liverpool What was it 2 seasons ago? 7-2? What was it? Oh man, हाँ, that but उसका Ross खराब ही तो Barkley गया। and Ollie Watkins rose up on the occasion. Man, what a Yeah. game. But What I a game. think Villa has great attacking talent, and Liverpool, for all their great transfers, Gravenberch won't be there, Konate isn't there. They are defensively weak. Best time for भाई them. मेंदू बड़ा है ना, अच्छा करेगा ब्रो। मेंदू बड़ा पता है ना दक्ष कौन है अपना? कौन? प्यार से नाम दिया उसको, मतलब आई रियली रेट हिम, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई रेट द प्लेयर। एंडो हाँ एंडो एंडो भाई, अपने भाई साहब है पुदन यार, इन द चैट पुदन ओपी यार, प्यार से दिया है, एंड आई थिंक इज अ गुड प्लेयर, आई थिंक इज अ गुड प्लेयर, पीपल आर स्लीपिंग ऑन हिम, एंड बाइजेटिच बैकअप है। Gravenberch, in my personal opinion, very strong opinion I have, doesn't fit Liverpool in terms of what he wants from Liverpool. लेकिन it's a good addition from Liverpool's perspective. वो मैं देखता हूँ, but अब देखते हैं. I feel that they need a DM, but I think we'll be fine यार. Defense. Center back they need. Center back. But लेकिन we know that when Van Dijk is available, he's anyway going to be there because he's the captain. उनके अलावा है नहीं ना, that's the problem. Konate है तो you cannot sign like Klopp doesn't play with like 30 man squad. You know that. That is also true. So you have to go with sometimes the manager. But Tottenham have asked for Torre यार, ये क्यों शुरू हो गया यार? Spurs के साथ नहीं करना भाई। What is that? 2.5 hours more. Loan. 2.5 hours more of the transfer. चलो, at least you Maybe he can become agent for end Chelsea. में सब पता चल जाएगा। भाई लेकिन मैं बोलना भूल गया, Andre Santos is on loan and he's ineligible for tomorrow's game. Wish him all the best. तो लेकिन देखते हैं भाई, Trevoh Chalobah, I don't want him to go if people really know why, but especially to Spurs. But कोई नहीं, much love to everyone watching. Again, हम लाइव रहेंगे आज दोपहर को और शाम को दोनों, तो चेक करना Almighty Sports, Almighty Blues and of course the Panels channels as well. अभी के लिए इतना ही है, गुड नाइट एंड एंजॉय द लास्ट कपल ऑफ आवर्स इन ट्रांसफर विंडो, और मिलान जीत जाओ यार, एंड चेल्सी आज जीतना है, ऑल द बेस्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, एंड यू नो आई डोंट मीन इट, आई नीड अ ड्रॉ। बाय गाइस।